Shivakant sir, can we start? Okay, we'll start now. Can I start, ma'am? No, I'll start first, then you Okay. guys will carry on. Okay? Yeah. So, hello, good afternoon, everyone. On behalf of Divyability Foundation, I welcome you all to this workshop. This workshop will be on resume building, interview guidance, grooming skills, and LinkedIn profile ethics. So, before moving ahead with the workshop, I would like to introduce you all with the Divyability Foundation. So, Divyability Foundation is a non-profit organization dedicated to empowering with persons with differently abled. Through our foundation, we offer various training programs, scribe support, and whenever we come across placement opportunities, we also share that. So, if I talk about training courses, we provide digital marketing course, stock marketing course, or we can say basic to advanced computer with NVDA. We have also run accessible math with LaTeX. Generally, visual impaired people feel difficulty in reading maths in the MS Word, so we do help them with that also. Along with the courses, we also provide volunteers scribe support. If any candidate need that, they can reach out to us. Apart from that, if we come across any placement opportunity in the private sector or any other, we do share in our groups also. So this was a short intro about our Divyability Foundation. So, talking about now workshop, this workshop will be held conducted by MBA students from FIIB, that is Fortune Institute of International Business. So these students will be conducting this workshop and they will be helping you with the resume building, interview guidance, grooming skills, and LinkedIn profile ethics. So this 4 hour session will be very insightful for you all. So please be till and if any doubts you will be having, you will be getting the time after the particular session. So suppose there is resume building first 1 hour session will be there. In that 1 hour, first students will be explaining about that. Then after I think 30 to 40 minutes, you will be giving a doubt session. You can ask your doubts in that time period. Please don't unmute in between. If you have any doubt, you can put in the chat box or you can raise your hand. Thank you so much. So over you to all guys. Thank you. So, good morning, everyone. A warm welcome to all of you. My name is Radhika Agrawal. Thank you for taking time to join today's resume building workshop. Today's session is designed to help you understand how to create a simple, clear, and professional resume. A resume is not about big English words or long paragraphs. It is all about showing your skills, education, and strength in a clear way. This session is especially planned to be easy to understand, step by step, and accessible for everyone. You do not need to worry if you are fresher or you do not have much experience. Everyone here has something valuable to offer. By the end of this session, you will know what to write in each resume session, what to avoid, and how to present your detail clearly. Please feel free to ask a question anytime. There is no right or wrong question here. Let us begin this journey of building a resume that truly represents you. Let me start with a simple question. Anyone knows what is resume? Can anyone tell me what is resume? So it's a document. So I am Aditya Dalmia. So Yes. hi. So like according to me, a resume is a
like a document that showcases a brief of your professional journey, your professional life, your educational qualifications, and the skill set Yes. that you possess. Yes, Aditya, you are correct. A, res- a resume is a one page document that tell employers who you are, what you have studied, what skills you have, and what experience or project you have done. Think of a resume as your introduction on paper. Before meeting you, employer first see your resume. So remember, your resume speaks for you when you are not there. Now Khushi will explain you further. Hello everyone, myself Khushi Srivastava, and as Radhika introduced you all that what resume is. So now before making resume, let us understand why do we need a resume. Okay, so I'll be giving a situation. Imagine there is a company and there is a job position and hundred of people are applying for that job. So the employer cannot talk to all 100 people. So what can they do? They see the resume. So a resume is not just a paper. A resume is your introduction when you are not present. That defines your skill sets and everything around that. There are few points that should be in a resume that help us to understand how we can move further. So the point one is resume opens door to interviews. Like think of resume as a key. If the key is good, the door opens. If the key is weak, the door stay closed. Simple way. Employer receives many resume every day. They don't know you personally. They don't know how talented are you. So your resume must clearly say who you are, आप कौन हैं, what you can do, आपके अंदर क्या skills हैं, एंड वाई शुड दे कॉल यू, आपके रिज्यूमे में डिफरेंट क्या है जिससे आपको कंपनी हायर करे. The second point is resume shows your unique skills. A resume, every person is different. Some people are good at communication, some people are good at computers, some are good at learning fast. But employer जो होता है, they cannot guess this. So your resume speaks on behalf of that. What your resume tells is what skills you have, what you have learned, what makes you special. Moving to the third point, resume builds your confidence. When you write a resume, something beautiful happens. What start thinking, what you have learned, what you are good at, and what you have achieved. That can be your education, your skill sets, your training, what you have done. Your resume basically speaks about your personality that defines every single thing of your career journey. So that is all. Now I would pass on to my another teammate to guide you all. Hello, good afternoon, everyone. I'm Priya Jenkwan. So let's begin with the first and most basic section of any resume, that is contact information. So this section makes it easy for recruiters to reach you. So it must be clear, correct, and professional. Always include your full name, a professional email ID, active phone number, current city, and LinkedIn profile. For technical roles, like mostly a GitHub link can also be added if someone is from BTech background so they can relate with it. So one small mistake here, like a wrong number or email, can hamper your opportunity. So now the second slide is crafting your career objective. Okay. So, in this section, this is career objective, which tells the recruiter who you are and what you are aiming for. This should be 2 3 lines only, short, focused, and role specific. Clearly mention the target role, highlight one key skill, and show the value you bring, not personal dreams of yours.
For example, like a good objective immediately tells the employer why they should continue reading your resume. Now we'll be moving to the next slide. Hello, guys. Are you able to understand the things well? Yes, ma'am. Yeah, Okay. continue. Okay, so now I'll talk about the education, like higher education. After the objective, we move to education, starting with your highest qualification. Here you mention your degree, year of passing, institute name, and CGPA percentage. This section is especially important for freshers because education reflects your academic foundation, sorry, and always list education in reverse chronological order, meaning the latest qualification comes first. Now I would like to call my another teammate, that is Anmol. Hello everyone, Anmol this side, and I'll help you to understand that how could you add your academic background into your CV, in your resume. So, firstly, you have to add the information about your degree. So, you need to, think about first thing that you have to mention that your highest degree that you have done, because we are from most of we are from graduation based students, so you have to mention your graduation first, and then you have to mention the year of passing, in what year you have graduated your degree, and then you have to mention your institutional details, that you what is your college name and university from where you are affiliated, and then you have to mention the academic performance, like what CGP or percentage that you got from your college. So, why these things matter? Because this will tell you that how serious are you about your degree, that how you done your degree in first place. So it tells you, and your college name and university always stands you in a crowd. And next, I'll tell you about the education in the foundation years. So we have two sessions that we have to mention. First is the higher secondary, that's plus two or diploma that you had done, or secondary section, that is 10th class that you have done. So you have to mention your board name, in which board you have done your higher or secondary education. It could be a state board, or it could be the CBSE or ISC board, and you have to mention your school name and college name. And if you mention your school name, it makes you relevant in crowd. And you have to also mention your percentage, because percentage tell you that how much you have put your efforts into your higher secondary or in your secondary, and both goes for the same. And if you got low marks in your higher secondary or secondary education, do not hide those marks, but just try to do not highlight them, mention them but don't hide them. And the next thing I'll talk about is the work experience, the experience you have gained while you were working. Because if someone is recruiting you, their first priority is to look out on you that you are experienced or not, because you have to work from them. And it is easy for organization to hire those people who are well experienced. So, firstly, you have to enlight your job title, the job that you were doing at that place, and then you have to mention the organization name, and then you have to mention the duration period, the time in which you were working there, and you have to mention the start dates and the end dates, because it helps the recruiter to see that how long you were working in that organization. And you also have to mention your key responsibilities, two or three impactful bullet lines, which will highlight your achievements and duties. So these points will help you to enhance your CV or your resume. It will shows everyone that you can take those responsibilities whenever you get into those specific areas. So you have to mention, see,
It's not mandatory to only mention the job that you have done. If you have done any internship, you can mention it. If you have worked on any project, you can also mention that. The main thing that you need to show is that you have worked there. So, anyone of you have any questions from last three slides? Am I audible to everyone? Yes, sir, you are. Okay, so do you guys have any questions I have regarding one it? question. So, like, if a person is disabled, so should he mention that in the CV resume or not? I don't think so that they need to mention this because Sorry, as what, can you ask the question again? No, if a person is disabled, should he Uh, or she mention that disability in the CV or not? Disability in the CV. Okay. Yeah. Not mandatory, but at the end, at the end of the resume, you can mention that, Okay. but not mandatory. Got it. Thank you. Yeah. okay, so I want to elaborate your question answer. Hmm. See, there is no legal requirement for that because your resume doesn't mean for that. It is mean to show your skills, education, and experience, not about yourself. Because in last you have to mention about your skills and the soft skills and the hard skills do you have. So these things matters most in your job profile. Yeah, that's true. Thank you. Okay, so I'll invite my other teammates to contribute in the slides. To end, remember these important resume rules. First, resume content tips. Use simple and clear languages. Start points with action words like worked, created, supported. Show what you did, not just job titles. Mention results if possible. And avoid copying resume from internet. Second tip is formatting and design tips. Use one font style only. Font size should be 10 to 12. Keep proper spacing. Align text properly. Avoid too much colors or design. Third tip is customization tip. Change resume from each job. Match skills with job descriptions. Highlight most relevant skill first. Remove irrelevant information. Resume, resume should fit the job role. Fourth tip is fresher and career gap tips. Fresher can add projects, training, certifications. Career gap is not a problem. Mention learning during gap and focus on skills gain, not gap. Fifth tip is accessibility friendly resume tips. Use clear headings. Avoid images or tables. Use simple bullet points. Ensure resume can be read by screen readers. Save resume as PDF plus Word. And then always remember a good resume is not fancy, it is clear, honest, and relevant. Now, Rose will continue. So good afternoon, guys. Now I will be telling you about an app that you can use in order to structure your resume well. So the Uh, name of the app is Excuse me. Resi. Rose, can we have doubts before that? If anyone is Okay, having. okay, we can have that. Oh, okay. If anyone is having doubt regarding resume, what the points need to be mentioned and what to explain in that, they can ask. Yes, ma'am. I have a question. Please tell your name first. My name is Fahim Iqbal, and I'm from Kashmir, and currently I'm doing BCA. Okay, Okay. you can ask. Actually, every time we have tried to create any resume or CV, every time we have, we saw different formats in our school at different levels. So, That, actually, first thing is the format must please please inform us like what shall be the format of the resume, exact format, which will be easy and accessible for a visually impaired user to uh, understood. yes. Uh-huh. And another another question is,
these days, like, what is more important, this overall skills that we have, or the percentage, as the sir mentioned, the higher secondary or secondary, percentage which we Mm-hmm. have to mention. So which one is more important? See, Uh, the Who would? percentage doesn't matter. Hmm. Percentage is just a number, but your skills, your how do you communicate, what is your personality, that matters a lot. Hmm. Percentage is just a number on a paper. So focus on building your personality more, work on your skills more rather than concentrating on your percentage. Your percentage should be more than just 70%. That will be perfect, but your personality and your skills should be, very well. Yeah, what company looks and there, are you suiting for the job role or not? Can you do the task or Yes. not? The skill set define, not the percentage. okay, so I want to add one more Also, thing. yes, Mm-hmm. Yeah. Whenever a company start recruiting employees, they publish a JD, job description. So that job description describes that what kind of employee they are looking for and what kind of roles they are, looking for this job. So you have to construct your resume according to that JD. So there is a no defined format of making a resume. It should be changed according to the job that we are looking for. We have tell you the basic things that should be in a resume. Mm-hmm. Format in the sense he's asking at top, just tell in brief again. At top, there should be the name. Below that, what all things should come in that way, like Yeah, main headings, Okay. yes, just ma'am. main headings. Uh, So is- Uh, Anmol, continue. okay. yeah. So you have to mention your name, your contact information at the topmost, which includes your number, your email ID, or LinkedIn profile that you have, or anything. Can we mention our address also in short? Yeah, you can mention your address. Okay. Am I audible? Hello. Yes, yes. Yeah, so actually, I am late, visually impaired. I was working earlier. I have a 5 years of work experience, Yeah. and now I have a 2 years of gap. So, Hmm. like, how should I fill that, like, in the CV? That is my Yeah, query. yeah. Just before that, we'll complete this part. Like Fahim asked, then we'll answer your question. Okay, sure. Thank you. Yeah. Uh, Anmol was speaking, right? Ma'am, I will like to continue. Yeah. As Fahim mentioned the points, so as he asked that should he mention his percentage or not. So Hmm. nowadays there are some specific job roles where the eligibility criteria is given. Like if a person has scored more than 80% or 85%, or a job role that is given which is suitable means on the number basis. In Hmm. that case, if the candidate is thinking that yes, he has the certain number, means uski percentage itni अच्छी है कि he can add that in the CV, which can Hmm. be plus point for him, that Hmm. in that case he or she should add their percentage, otherwise they should totally avoid it. Nowadays in some companies do ask about the CGPA and the percentage, otherwise it is good to go without the numbers being Hmm. mentioned in the resume. Hmm. And Anmol was telling about the headings, main headings, which should be in the resume. Can you continue that? Okay, so the next Hmm. session after your name is about you, that what kind of a person you are, in which you can mention a little detail about you, and you have to construct that that part according to the JD they are looking for. That could be the heading objective, Yeah, right? Uh, and next part is your the education part, the education that you have done in the past, and the next part is the experience do you have in the past, that the experience you have done the You can, job. what could be the main heading? Only experience or professional experience? Work Yeah, experience.
work experience, professional experience, these are the different terms that you can use basing basis on Yeah. the resume you have. Mm-hmm. Okay, and we'll share a template in the last. And, we will share Mm-hmm. the CVs or resumes of one of our candidates so that everyone can take a look at it and get the know that what we are telling them. And And after the work experience, what could be the next heading? you have to mention about your skills, the skills like soft skills or the hard skills that you have to mention in those. Hmm. Soft skill, hard skill. Okay. Yeah, in which you can mention the technical skills, the software programs and the languages that you can use, and Hmm. any software including Word, Excel, or Hmm. you are a student, AutoCAD, any language that C++, Java, Python, you can mention Hmm. those technical skills in that, and you can also mention your soft skills like your communication, leadership, and multitasking and problem solving. These skills you can also mention there because when you have to work with a lot of people, these skills will come into work in that time. And Hmm. you also have to make those things job relevant because I'm putting a point from the very first time that you have to make a CV according to your JD. Hmm. Because Uh, if someone is looking for a technical job, you can't mention a different skill that is required in that job. For example, if they are looking for a analytic role they are looking for, so you have to get knowledge about those analytical tool that they need. So you have to mention that key, yeah, I know about this Yeah. tool and I know Like, about do you know about the system, how it works? Like, how keywords matter? yeah. Mm, that way you can tell. There are some power words because Rose mentioned one thing that there is a system called ATS because nowadays a lot of applications are coming to recruiters. So what they do, they have developed a software called ATS. So what ATS did, they screen the profile first. They screen the all resumes first, and they'll select the resumes according to the company's guidelines. So there are some power words that are created by these recruiters. So if we have those recruiters, ATS will select us for sure if we have those Mm. power words. Based on the JD, it will Yeah, look for certain keywords. If that resume has that keywords, then that resume will be selected for maybe next round. But if that keywords are not present, then it will be like not considered. That kind of thing. So yeah, design the resume based on the JD carefully. So as that person asked about the format, as I am also visually impaired, I also design my resume myself. I think better tell that. You can ma'am, just simply sorry. ma'am, I would like to mention one more point here. Yeah. Can I? Okay, Yeah, yeah. so as Anmol mentioned work experience, so after work experience, we can also mention the assignments or the projects we have done during our college. Like that would be cherry on the top. So I would Yeah, suggest that we projects can could add be that as the well. Yeah. after work experience, projects could be the next heading what we have worked Yeah, on. and Yeah. then skills will come. Yes, yes. And yeah, nice. Yes. Yeah, so for the visually impaired people, what they can do if they want to design their resume themselves, just open a Word file, okay? Type whatever like things should come in the resume. Keep the font style Calibri, okay? For complete resume, keep the font style Calibri. That will be better. And just keep the main headings. The name at the top will be also considered in that way only. Like main heading will have 14 to 16 points of font size, okay? And other main headings like objective, education, work experience, all these headings you can keep around I think 12, okay? 12 or 14 depending on the whatever you want. Main name you can keep 14 point. Content below that you can keep 12 font size. Like
your contact details and all. Below that, objective and all main headings you can keep 12, and the content should be 11 point font size, which should come under the heading. Okay, I think now we have covered that question which was asked by Fahim. And do bold the headings so that it look different from the rest of the content. Okay, so I think Aditya asked one question. If he can ask that again. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, Yes. Yes, you are. Yes, you are Yeah. audible. Yeah. So I was asking that I am a late visually impaired candidate, and I have a work experience of 5 years, and from the past 2 years I'm not working due to illness. And so how do I mention that in the CV? How do I fill up that gap? so have you done any courses or any certificates in while that period? Yeah, I have done like from XRCVC and from RCGF and everything. So I have done courses Okay, for so learning screen reader software as yeah. okay, so if you have done those things in the gap of those 2 years, you can mention those things into your resume because it is counted as your skill set increasement. So yeah, it will help you in that. You can And basically make a session for career break and mention the year gap, and then you can mention all the things you did in the gap. Mm-hmm. And you have to be honest, never fake experience or dates, Mm-hmm. so that recruiters can get clarity. I also want to add something. Like, the important thing is to explain it clearly and honestly. You should never leave a gap unexplained. Simply mention what you did during the time, such as preparing for exams, learning new skills, taking care of family. I would like to give example of my own. As I was preparing for CAT examination, so I was having gap of 1 year. So at the same time, I was working in a company that was a startup, but and after 12th standard also, I was having gap of 1 year. So I was preparing for JMains examination. But during the interview time, I was very honest. I clearly told them what I have done, and they'll accept that. What matters the most is your skills. Got it. Also, Thank you so much. Aditya, I would like to say, like you mentioned, ki you have done a internship during your gap. So basically, mention No, that I haven't point done my as internship. I had done okay, my so I was just learning new skills because I got like I was perfectly fine. I was working with Zomato as a business analyst, and okay, due to a viral infection that attacked my body, I lost my vision. That caused a brain stroke. So, okay, so that's the reason. Like I have a gap of like 2 years. So okay. you So have to Mm. be honest about that, like clearly explain that what happened to you, and like that will. okay, so as I have started the point, so I will like to complete it. This is to everyone. If you have done a certain job or anything and you have taken break of like 6 months, 1 year, 2 years. So if in those time you have done any work, any kind of internship, worked under someone, so mention that point as industry experience. This will make your resume look more professional, and the points which you will add in that will help the recruiter to find that okay, if he or she has taken the gap, means if any certain reason is not defined due to which you have taken the gap, and if you have done something under that time, so if you will mention it under in the industry experience, so that will make your resume more professional, and that could be more add more valuable points to your resume. Yeah, your question is answered, Aditya, right? Yes, absolutely. Thank you. Okay, so anyone else having any other doubt, or we can move ahead with the app Rose was telling about? Actually, another Uh, short question.
Yeah. Yes, actually, like what is the real difference between CV and a resume? Okay, who would answer, please? Guys. I guess the difference between CV and resume is that resume is like very short, one page document that highlights only the most relevant skills, education, and experience for a specific job. Like it is very professional. But if I talk about CV, so a CV is a detailed and longer document that shows your complete academic and professional history. Like it includes education, research, publication. As I have mentioned few minutes back that you have to mention your projects, assignments. So this will come under this, and certifications, training and achievements, and it is usually used for academic research, training or international applications. Like resume is very short and job specific, and CV is detailed and full career record. So this Mm, is the main difference. So I Uh, will sum up the whole answer. In resume, it's for the job, and the CV is for the academic purpose. So resume is a one Yeah. page or two-page document. On the mm. other hand, CV is more than between 2 to 5 pages. It's like a full Yes. explained, which Yeah, explains yourself, which yeah, explains you, like what yes, you yes, are yes, exactly. yes. Hmm. Yes, ma'am. Or ma'am, common mistake done by people is that many people say CB but actually submit a resume. So Hmm. always read the job description carefully. Resume is for getting a job. CV is for showing your full academic life. Hmm. Okay. Also, resume is built for freshers, whereas CV is held by professional, like who have works experience for more in that industry and want to switch in that case. Hmm. Okay. Any other question? If you are confused that what you have to submit for like job roles as a fresher, so you have to submit your resume. Hmm. When you will have some experience of many years, then you can draft your CV and then you can submit it. So as a fresher, you have to submit your resume always. Okay, thank you so much. Ma'am, I have one question. My name is Manush. I want to ask how can I submit a resume if I'm a fresher? We gave you a template, no? So you have to draft your resume according to that. And now I will be telling you about a app. Or you can upload your resume on that and draft it accordingly so that your resume can be structured and professional. Okay, then we Ma'am, can ma'am, one continue ma'am, with this. Yeah. ma'am, one question, ma'am, one question. How we will know as a blind that we are correctly sizing the font? Some things are spoken by screen reader, but some things are not spoken by the screen See, reader. basic thing which you need to do that screen reader announces very well. Just after doing that, ask for any sighted person that review this resume. Is it okay or not? That needs to be done. But the basic Yeah, thing which sighted I person has told, to be the basic. font size. See, listen, font size, font style, bold part, whatever I told, simple basic thing, everything screen reader announces. After making your resume in the Word file, just save it as a PDF. And one thing I would like to say, never share a doc file, always share PDF if you are sharing online to someone. Okay? Hello, ma'am. Question. Yeah. Yeah. Can we Actually, have question after like few minutes? Let's cover the tab part. yeah, no, actually, it's small question, ma'am. Where can I get the template actually? Yeah, we'll share everything. If you like, you are in our groups, right? No, ma'am. Actually, I'm not. That's why I'm asking. No issue. I'll tell you at the end, be till end, that you will get the template. No worries. Sure. Thank you so much, ma'am. Yeah. Okay, Rose, you can continue with the app part. Okay, so guys, now I will be telling you about the app.
The name of the app is Resi. So basically, what Resi do is it's basically an AI-based resume building application that helps students and job seekers to create professional and structured and ATS-friendly resume. So now you might be thinking, what is ATS? So ATS score is a percentage or rating that shows how well your resume matches a job description when it is scanned by an ATS. Right? So Razy help with the like with matching the ATS score. It guides users step by step while writing their resume and provides a real time suggestion to improve content, formatting, and keywords. It basically helps you to build a professional resume from scratch, creates ATS friendly resume, suggests keywords based on your job roles. Now, most of you were asking that what keywords should we use, so it will suggest you that these are keywords that you can add in your resume. So it also help to improve your resume format, clarity, and structure. Provides ready-made templates for students and freshers. As you asked, one of you were having a doubt that where can we get templates. We will provide you with that, but Daisy will help you with that also. Just a minute. Guys, I've shared WhatsApp group link. Kindly join that, then it will be easy to share with you all. Okay. In the chat box, I have pasted that link. Okay, Rose, you can continue. Okay. So now you might be thinking that as a visual impaired, so how can we use Resi app? So you can use assistive tools like screen readers, example NVDA and voiceover that can read your text on the screen aloud, helping blind users interact with the site app, especially when the layout is clean. So that will help you. Rose, I have a question. Is it Android based application or the like No, website based it's something? applicable everywhere, like Android and iOS. It support everywhere. Means on Play Store also we can get this application. Basically, you can search it on Chrome. It's a basically site, Chrome. so you can search Okay. Resi. I will provide you with the link. So Okay, it's you can basically try. website based, not an Yes, app. yes. Okay, understood. So, do we have any doubts about Resi? Then is it accessible when we use with our mobile phones also? Resi Yes, app? yes, it is. And Okay. that you need to explore. If you face any difficulty, you can reach out to us later. So that's why I'm saying join the WhatsApp group. If any difficulty, you can reach out. But I would like to add, like we also use Resi for our resume. So if you have laptop or tabs, so it is basically good because a certain ATS, a certain score is given to your resume after you put it in Resi as it is designed. So on phone, sometime I think problem can be created. But in case if you are flexible with laptops or any other device, then please go with that. Otherwise, phone is also good to go. So, do we have Okay, any so doubts? can you tell the just website, give website link or something like that? Yes, I will give you the link for Resi. You can share it with them. Yeah, sure. Okay, just tell the little bit process how to navigate with this. Yeah. So basically, you have to upload your current resume on the Resi app. It will show you the ATS code that your current resume contains, and then you can start editing on it. The ATS score will keep on increasing or decreasing. That will help you to know that whether you are going well or not. And it will suggest you keywords. There will be a option on the right side of your screen. It will help you to know whether what you can add on it that can increase your RAISE score. And if you get 85 to 90 range of RAISE score, then you are good to go.
Okay, basically uploading our resume which we have currently. It Yeah. can be in Word or PDF, any format, right? Yeah, yeah. It supports. Then after that, we can just edit on that website itself and then download the improved resume. Yes. It will help you to Okay. increase your RESI score and then you can, sorry, ATS score, and then you can download that. Hmm. Okay. So, okay. Anything else which is left? From our side now, Radhika will end the PPT, but if you have any doubt, you can ask. Yeah. Any doubt regarding the thing which is not asked before, you can ask. Uh, Excuse me, ma'am. Ma'am, I just wanted to confirm with the accessibility score of the website you're talking about right now. That we need to test because as these students are also cited, so we need to explore that we can do at our end, right? So we get to know the platform where we can do this, but accessibility part we can explore. Right, sure, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah, हेलो anyone मैम। else? Yes. हेलो मैम, Yes, yes. मेरा नाम मीराज अली, जी. मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा 10-12 साल का गैप हो गया एचएस से अभी तक ग्रेजुएशन परस्यू करने में। हाँ जी. बीच में मैं कुछ जॉब किया था, लाइक एक कैप्टन का जॉब किया था होटल में, 3 स्टार होटल। ओके. और बाद में जी. ट्रेडिंग स्टार्ट किया। अभी ऐसा ही चल रहा है। अभी हम्म. रिसेंटली मैं ग्रेजुएशन परस्यू किया हूँ। तो ठीक इतने है. 13 साल का गैप, 12 साल का गैप, इतना भी डिटेल्स भरना नहीं रिक्वायरमेंट नहीं, है वो उसे? ऐसा प्रॉपर इतना डिटेल में नहीं कि हर साल में आपने क्या किया है। आप जस्ट आपने क्या क्या कोर्सेज करे हैं, हेडिंग्स बताया था ना कि आपको उन हम्म। हेडिंग्स के अंडर बस वो आपको अपनी स्किल्स और आपने जो भी वर्क किया है वो मेंशन करना है डेट के साथ, दैट्स इट। इतना लंबा अच्छा, पीरियड तो आपने ओके ओके। एक्सप्लेन करेगा ना। अगर अगर लाइक मैंने पहले भी जब साइटेड पर्सन की तरह उसी स्कूल में पढ़ता था, तभी नॉर्मल सा कंप्यूटर सीखा था। और अभी हम्म. मैं एनवीडिए यूज करके अभी कंप्यूटर सीखा। तो हम्म. जब रेज्यूमे में कौन सा मेंशन करना बेस्ट होगा? देखो, वो रेज्यूमे में नॉर्मल। आपको स्किल्स मेंशन करनी होती हैं कि आपको क्या क्या आता है। एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, उसमें ये मेंशन नहीं करना है कि कहाँ से आपने कौन सा कोर्स किया है। एजुकेशन में मेनली आपको अपना 10th 12th ग्रेजुएशन ये सब मेंशन करना रहता है। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप सर्टिफिकेट आई थिंक हेडिंग डाल के मेंशन कर सकते हो। थैंक यू। हाँ. Ma'am, is recorded today's class. It's yeah, मैम, it is recording. Yeah. मैम प्रोसीड Ma'am, करने you से पहले shared मैं me एक on चीज और पूछना WhatsApp. चाह रहा था। हाँ जी, पूछो. मैम मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों के पास एनी ऑल्टरनेटिव है जो बिकॉज ये एटीएस पोर्टल का तो आप लोगों को लाइक यू नॉट रियली श्योर विद द एक्सेसिबिलिटी थिंग, बट वुड यू हम्म. हैव एनी alternative to that website for accessible friendly sort of a site which we can consider to be the second option kind of? ऐसा कुछ है आप लोग के इंफॉर्मेशन में तो? करंटली हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप उसको काफ़ी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हो, और जैसे वो आपका स्क्रीन रीडर आता है, एनवीडीए वॉइस ओवर, आप वो यूज़ कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकता है। बाकी आई विल हम्म. रिसर्च अबाउट इट एंड लेट यू नो। Right, thank you so much, ma'am. नो प्रॉब्लम। Basic recommendation is just type your resume yourself on the Word file, okay, and review it with someone expertise who is having in that. You can reach out to us later also. You can just make your resume, share with us, and then we can review that and let you know with that part. जी Okay? बिल्कुल मैम, sure मैम. Yeah. Yeah. Okay. I think we can move with the next session if doubts are over regarding this. Ma'am, will you share that recording? So that recording will be shared, but it will take some time. Okay.
Yeah, most probably, I think we'll upload on our channel itself. Okay, ma'am, what's your name? Shweta. Okay. Yeah. Okay, Okay guys. then. So, from Yeah. our end, we would like to finish the resume building session. I hope you all understood everything very well. And if in any case you all are facing any problem, we are very good to go with helping you all. And please ask your doubts, and you can reach out to us in the group, and we will be helping you. And thank you so much for your time. Thank All you, the ma'am. best for your next session, guys. Yeah. Everyone has joined for the next part. Rose. Oh, let me check. Give me a minute, please. Hmm. No, guys, just be on mute for a few minutes, 1 or 2 minutes. Yes, most of them are here, so So, you can start. okay, share the screen. Hello. Yes, ma'am, we are sharing the screen. Give a minute. Uh, Okay. Till then, is there anyone who wants to ask regarding how to type on MS Word? Uh, Hello, Shweta. Am I audible? Oh, yes, so. So it's for everyone, people who are here from FIIB. So once when you are about to end your session, just say कि for this session we have this much now. Don't say thank you so much for your time and all, because I have seen a drop of the candidates from the student side. They thought कि it has got over. So try Hmm. to be in that way, right? कि Hmm. आप इसको ऐसे ना बोलें कि अभी जस्ट खत्म हो गया, so वो समझ के चले गए. अभी I have seen like people have dropped. Recently I joined. Hmm. I was checking the participant list and I saw that. Hmm. Hmm. So बस आप बोलो कि next session is that. So announce for the next session, and for my session it was that much, like that. Hmm. You can Hmm. yeah, Okay. continue. Yeah. Hello. Yes. Yeah, shall we start now? Yeah. Yeah. You can start. Okay. Okay, so good morning, respective faculty members and my dear friends. My name is Jen Javla, and along with my team members Kaushal Sharma, Kajal Mishra, Akshat Gupta, and Rhythm Jain, I'm presenting our summer intention project titled Effective Interview Skills for Candidates.
The purpose of this project is to support candidates with disabilities in preparing for job interviews with confidence and professionalism. Many talented individuals do not struggle because of lack of ability, but because they are not guided on how to present themselves, communicate their strengths, or explain their needs in an interview setting. So, through this SIP, we have created a practical and structured guide that explains how interview really looks like for how candidates should prepare, how to handle common interview questions, and how candidates with disabilities can confidently talk about their abilities, tools, and working methods. So, our objective is to help disabled candidates feel job ready, confident, and empowered so that they can complete equally and succeed in the professional world. Over to Kaushal. Good afternoon, everyone. I'm Kaushal Sharma. I'm here to present the second slide of our PPT. What interviewers really look for. Here we can go. Understanding what interviewers value most can transform your interview performance. Employers across all industries consistently seek for fundamental qualities. Here we have four parts for interviewers. Like in confidence, interviewers look for confidence. This does not mean being perfect. It means speaking clearly, trusting your abilities, and showing that you are ready to take responsibilities. And the second one is communication. Good communication about explaining your thoughts in a simple and clear way. Interviewers want to know whether we can express ideas, ask questions, and work with others. And the third part is willingness to learn. Employers understand that no one knows everything. They value candidates who are open to learning and adapting things fastly. And the fourth part is positive attitude. A positive attitude shows interest, energy, and motivations. Interviewers prefer candidates who are the solution oriented. Now I can over to Akshat. So a very good afternoon, everyone. So this is Akshat Gupta, and I'm going to present like how to prepare for the interview when any candidate is going for an interview in a company. So the first and foremost thing which is important in the interview round is like how confident are you in your preparation. So when you and for this you should know that you should know about the company, you should know your skills in which you are good at, practice the speaking part, and which overall reduces the fear of no which overall reduces the fear of facing the interviewer. So a good presentation helps you talk clearly, calmly in the interview, and it makes you feel ready and positive as well. So the first thing is to know the company in which you are applying for the job. So for that, like you should first learn what the company does and what services or product they are catering, and then know the company name and type of work they are doing. This shows that the candidate is really serious about the job they are applying, and it helps you to connect your answers with their work which they are doing. So interview feels that you are interested and enthusiastic candidate when you are not taking anything casual in this. And then the second part comes with the know yourself as well. Be clear about your skills and strengths as well. Think what work can I do well, which are aligning to your strengths and skills. And if possible, keep some small examples as well from your training or your life to relate to their interview round, so that they can align your skills or your any work experience with that. And this helps you answer without confusion, and you speak with more confidence when you know yourself as well. Now the third part is the practice speaking. So like you should prepare a 1 to 2 minute self introduction speech, and you should practice that in front while recording in your mobile phone while practicing, and should can say uh, learn from that what in what thing you are lacking, so that you can work on that and make it better.
And then practice with your, you can also practice with your friend, trainer, or family member as well. You can record your voice and listen them. Practice which makes your helps remove fear and nervousness. So with this your voice becomes more clear, confident, and steady as well. And the fifth thing is the fourth thing is be ready. Be ready with your resume properly. Remember your education, skills, and experience. Be ready to explain gaps if there's any gap. Explain it honestly, and then know your full journey of your academics, training, any work experience if anyone is having, and then which helps you answer quickly and correctly as well. Now and I would like to go on to the second slide, which is common interview questions you will face while you are giving an interview. So, like the first is tell me about yourself. This is the most common and normal question which almost in every interview the interviewer asks, which is tell me about yourself, in which you cover your name, what's your name, what's your background, your skills, your career goal in short, your long term and short term goals, and you like is there any gap, then why there's a gap. And then the second part is what are your strengths as well. So in your strength you can say like what you do well, with some explain it through one example, and what you want to be, and how how willing you are to learn and learn new things. And the third is why should we hire you. This is also a most important question, like why should we hire you, because it tells how you can help the company and how willing are you to accept the challenges and accept their work culture. And the last question, like how will you manage your disability, like explain tools like screen reader, mobile apps, and your working style, which focuses on your ability not on weaknesses. And the last thing is pro tip, which is very important, it is practice answers by speaking aloud, and do not memorize word by word, just understand those things and speak naturally, like talking to you are talking to a normal friend or a person. And this makes you a sound confident, honest, and professional as well. Remember, every interview is a learning step. Now I would like to hand over the next PPT to my colleagues. Hello everyone, good afternoon, and I'll be talking about essential tips for visually impaired candidates. So, this slide focuses on some essential tips for visually impaired candidates to perform confidently in interviews. So, as a visual impaired candidate, you bring unique perspectives and strong problem solving abilities to the workplace. Interview success comes from clearly presenting your strength while being open about the tools that help you work effectively. So, first of all, I'll be telling you that you should talk about your abilities. Always focus on what you can do and what you have achieved. Highlight your skills, specific accomplishments, and the ways and the abilities that you have in which you can solve the problems. So, employers are mainly interested in the value that you bring to the company and how reliable your work is. Further, you can mention the tools. So, confidently explain the assistive technologies you use, such as screen readers or mobile applications. Also, explain how these tools help you stay productive and work independently. This shows that you are resourceful, capable, and comfortable with technology. Another important point is to listen carefully. Take a moment to fully understand each question before answering. There is no need to rush. Clear and thoughtful responses show good communication skills and attention to detail. Finally, you can ask as many times to repeat if it's needed. It is completely professional to ask interviewer to repeat or clarify a question. This ensures correct understanding and shows that you are focused and attentive. Overall, confidence, preparation, and clear communication will play a major role in the interview success. For the next slide, I'll call another one to present. Good afternoon, everyone. Today I'm going to talk about how body language and voice helps us to look professional when we talk, which basically has the four major points. First is sit straight.
When we sit straight, we look confident. If we sit in a lazy way, it looks like we are not interested. Sitting straight also keeps us active and focused in our conversation. Our posture should be like this: back straight, shoulders back, and feet properly on the ground. So, our second point is face the voice. The second point basically means we should face the person who is speaking. When we do this, it shows that we are listening carefully. It also makes the conversations flow better. If we look somewhere else while the other person is talking, it looks rude and unprofessional. The third point is speak clearly. Many people speak too fast when they are nervous or too slow when they are unsure. Both make it difficult for the listener. We should speak at a normal speed and pronounce our words properly so the other person can understand easily. We should also use a warm and professional tone, not too loud and not too soft. Small pauses between sentences also helps the listener think and respond. Our fourth point is be polite. The fourth politeness is a very simple but very powerful tool. Using polite words like a gesture creates a positive impression. Small words like good morning, thank you, I appreciate it, or it was nice talking to you shows respect. People remember polite behavior for a long time. Now over to Kaushal. Now, this slide about common mistakes to avoid for interviewers. Even well prepared candidates can stumble on preventable errors that undermine their qualifications. The awareness of these common faults helps you avoid them and the present best professional self. Now we have some mistakes to avoid for interviewers. Let's discuss some common mistakes. The first mistake is negative self talk. In this, candidates should never focus on what they cannot do. Statement like I can't do this from interviewers reduce confidence in the interviewer's mind. They have to be focused on abilities, skills, and achievement. And the second mistake is being too silent or nervous. Like silence can be misunderstood as lack of confidence, lack of interest. So it is okay to take a moment to think, but candidates should respond calmly and clearly. The third mistake is giving very long answers, like long and unclear answers in paragraph can confuse interviewers. We the interviewers should have to answer should be in short and focused within 1 or 2 minutes. And the fourth mistake is not knowing about the company, like not doing any research, not researching the company shows lack of interest. They have to focus on basic company research, help candidates align with their answers with company needs. And the last and fifth mistake is hiding the disabilities. Avoiding discussion about disabilities can create awkwardness. So it's better to talk confidently about assistive tools and how we work independently. Avoiding these common mistakes helps visually impaired candidates present themselves confidently and professionally. Now I can over to Jayant for the last slide. All right. So, to conclude and summarize our PPT, we would like to leave you with a strong message. Disability is not just a weakness, it is a simple, a different way of working. What truly matters in any career is your skill, your attitude, efforts, and willingness to grow. Every interview you attend builds experience, confidence, and clarity for the next opportunity. Candidates with disabilities bring unique strengths, resilience, and problem solving abilities to the workplace. By communicating clearly, using the right tools, and believing in yourself, you can perform just as well as anyone else. With regular practice, preparation, and self confidence, success is just not a question of it, it is only a matter of when.
On behalf of my team, Kaushal, Kajal, Akshat Redan, and myself, Jen Javla, thank you so much for listening. We hope this presentation encourages more confidence, inclusion, and equal opportunities for all the candidates. Thank you. Thank you so much for this session. Yeah, so Also, For, yeah, yeah, ma'am, mhm. we further, have we are Yeah, going go to also, ahead. present a mock interview. right. We have also prepared a mock interview role play script. So, if you allow, we can present it over like then and there. Yeah, yeah, go ahead with that. Just a second. And just I want to say once more, like yes, Shivakant sir told, while ending the PPTs and ending one particular segment, we say thank you. Just don't leave the session. Stay here till 5 p.m., guys. Yeah, Okay, ma'am. go ahead. Yeah. Yes, ma'am. So we are now going to start the mock interview. There are three interviewers. Kajal Mishra as interviewer one, and Kaushal as interviewer two, Akshat as interviewer three, and Jayant as interviewee. So this is just a mock interview which is going to explain that how one should present themselves at an interview. So I'll be starting with the interview, and Jayant will be the interviewee. So good morning. Please make yourself comfortable. Can you start by introducing yourself? Yes, good morning, and thank you so much for giving me this opportunity. My name is Rahul Sharma, and I have completed my bachelor's degree in engineering in computer science. I'm a fresher, but I have done internships and academic projects that help me understand practical applications. I'm interested in learning new technologies and building a strong career as a software engineer. Okay, Jen, why did you choose engineering as your career? Sir, I choose engineering because I enjoy problem solving and logical thinking. Right. During my school days, I tell you a story. I was interested in mathematics and computers. Engineering gave me the chance to turn ideas into practical solutions. I like how technology can improve daily life, and that motivates me to work in the field. Right. So that's why. So, okay, Jayan, this side Akshat, one of your Mm. interviewer. So, I need to Yes, know sir. that can you tell us about your technical skills? As you highlighted, you love the technical skills. So, could you please elaborate? Yes, sir. Yes, yes. So I have basically like two intermediate knowledge of programming language, like you can say Java and Python. And also I am familiar with the data structure, like SQL database and basic web developments concepts. So I have also worked with tools like GIT and have basic knowledge of software development lifecycle. So yeah, overall, these are all my technical skills, which I can be presenting in front of you guys. Okay, Jayant, good. Since now we know about your technical skills, could you also tell us what projects you've worked on? Yes, ma'am. So one of my major project was like as a student of management system, the goal was to store and manage student data digitally, right? So I worked on backend logical and database connectivity. This project also helped me to you can say understand how real world applications and designs and how to work with a teamwork is important in completing a project successfully. So that was my like recent and last project which I worked on. Okay. Okay, Jen, tell me about the challenges you are facing during your project and how did you handle them? Sir, one major challenge was debuting errors in the code. Like initially it was difficult, but I was learned to read error messages carefully and search for solutions. So I also took help from seniors and online documentations. So the experience taught me
patience, and the importance of continuous learning. So that's how it was. So, yeah, so Jen, could you please tell us that how do you handle pressure or tight deadlines? Sir, I try to stay calm, right, and break the task into smaller parts. I prioritize important work and focus on completing one task at a time. I'm a bit time oriented, you can say that. So, if needed, I ask for guidance instead of delaying work, right? So, I believe proper planning helps reduce pressures according to my frame of reference. Okay, Jayan. So, what are your strengths as an engineer? Okay, so my strength as an engineer, ma'am, my strengths include problem solving skills, basically, like willingness to learn and teamwork. So I'm disciplined and take responsibilities for my work. I also try to understand problems deeply before jumping into the solution. Right. Great. So, Jayant, as you say about your strength, tell me about your weakness also. Sir, weaknesses like I sometimes spend extra time trying to make my work perfect. But however, I'm learning to balance equally, right, with time management. So I'm also working on improving my communication skills by practicing regularly. But yeah, at times I tend to like overspend some time on my projects and my work. But yeah, I'm working on that. Okay, Jen, so tell me, like, why should we hire you as we are also having the most experienced persons in our list? So could you please tell me that what positive thing are you having that we should hire you? Okay, so sir, as I'm a fresher, I bring a positive attitude, like strong basics and eagerness to learn, and open to feedback and willing to adapt to company requirements. I believe I can grow with the organization and contribute sincerely to learn to my team members and also to my organization. So that's why, sir, I think I'm the best fit for the, role you are hiring for. Okay. Okay, Jayan. So, can I ask that where do you see yourself in next 5 years? Next 5 years, ma'am, Yes. like next 5 years is a hell lot of a time, but yeah, in next 5 years I see myself as a skilled and confident engineer handling responsibility independently. Like I want to improve my technical expertise and contribute to important projects while growing, alone with the company and the organization. This my down the line 5 years of plan. So, Jen, do you have any questions for us? Yes, sir. Yes, sir. I would like to ask, to know about the training and learning opportunities provided for freshers in this role. Like, what will be my key responsibility area which I'll be handling over there if I get selected in this interview? Okay, Jen, we will let you know through your mail, and thank you for your time. We will get back to you soon. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for this opportunity. It was a pleasure to speak with you all. Thank you. Okay, thank Thank you. you, Jayan. Yes, sir. Our script is over, and I have So, we would like, something. yes. अच्छा सॉरी, इसमें क्या ग्रूमिंग का पार्ट कवर हुआ था या मैंने मिस्टेक कर दिया? प्लीज एक बार बोलिएगा। ग्रूमिंग का हमने पार्ट अब इसके बाद होगा ना? ओके ओके, Ma'am, थैंक यू। actually, या grooming is next team, is team D, I guess. हाँ, इंटरव्यू के थैंक बाद यू होगा। मैम। yes, हाँ, yes. ओके So, सो anyone, गो if अहेड। anyone wants to ask any question or wants to know if how they should perform in the interviews, they can ask. Yeah. Excuse me, ma'am. यस
Good afternoon again to the panel. I really am curious and also, wanting to know about the last two questions of the interview script that just happened. Like, I mean, from an interview as well as an interviewer's perspective, I want to understand this. Why is this two question, very common, and like, what is the interviewer actually trying to get from us, the interviewees, when they're asking about, why should we hire you, and also like, where do you see yourself, and like, what is the actual aim of the interviewer, and how should we very efficiently tackle, just like Sajjan did right now, and how important that becomes. See, could you please tell me your name? Ma'am, I am Nyonyok Talam. Okay, so New York, see, it's very important for a company to ask that why they should hire you because they have a very good pool of experienced candidates. So until and unless you will mention that what is your unique selling point, what is your USP, what is the different thing or the spark that you have. So they want to know about that differentiating factor. That's why it's very important for the companies to know it. So is So, this ma'am, answer satisfactory? Yes. yeah, but is that factorization different from something available in our CV/resume? Uh, I Actually, mean, we Hello, almost mention everything in guys. our resume, right? I would like to I answer believe. your question. Hi, what's your name? Sir, Nyonyok Talam this side. Neong. Okay. So when an interviewer asks you a question like, why should we hire you? So that means that interviewer want to see ki how well you have understood the job description and how have you put your expertise or skill set according to the JD. Getting? Ki for example, there's a JD and you have understood the JD and you have in your answer he want to see ki how you have put together all your skills and everything and how will you take it forward. So he wants to see your eagerness and your mindset, like how you have gone through, whether you have gone through the JD or you just came just for the interview. Getting? Right, sir. And the another question, what was the another question? It was about contemplating the coming 5 years. 5 years. अब देखो इसमें I ये suppose. होता है, मैं खुद इंटरव्यूज लेता हूँ, हमारा होता है जब वी आस्क ना कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं. सो इन जनरल वी वांट टू सी कि हाउ प्रोग्रेसिव माइंडसेट यू हैव. ये मैटर नहीं करता कि आप मेरी कंपनी में ही खुद को बता रहे हो, बट वी शुड, अगर आप किसी कंपनी के लिए यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड यू आर इंटरव्यूइंग फॉर अ कंपनी, यू शुड टेल अबाउट दैट कंपनी ओनली कि मैं अभी ये करना चाह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू आर ज्वाइनिंग एज सम एक्स पोजिशन, राइट? just you go through again JD वाला part आता है यहाँ पे. You have to हाँ जी. undergo and you have to tell your expertise and how you are going to work. You work, talk about your cost function skills and whatever. You just put all the skills together, tell them these are the things, and step by step you show your progressive mindset. It could be getting to a senior position or going to a separate business of your own. That doesn't matter. But the interviewer want to see how progressive mindset you have. तो सर ये मैटर नहीं करता कि आप सरपास करने की सोच रहे हो या आगे बढ़ के है ना कुछ और करना, मतलब इट्स जस्ट अबाउट प्रोग्रेसिव माइंडसेट. इसके अलावा वो लोग उससे कुछ खामियां या वो तो नहीं निकलना चाहते ना कि आफ्टर वी आंसर इन सच मैनर, शायद वो लोग उससे डिसाइड करें उनको नहीं, पसंद आए ना आए, वैसा कुछ हो सकता है नहीं, क्या, क्योंकि जब वो सब. तो आपके आपके क्वेश्चंस के आंसर पे डिपेंड करता है कि आपने आंसर कैसे किया है. बट अल्टीमेटली मैं बताऊं, मेरी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने आए हो, आप सबको पता है कि कोई भी कंपनी में लाइफ टाइम के लिए कोई नहीं रुकता अनलेस अनटिल उसका बहुत बड़ा ऐसे अपना कोई सत्य नडेला नहीं राइट. हो तो, ठीक है. उसके अलावा अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, सबको पता है कुछ टाइम के लिए है, पर जब तक आप है वो बस वो चेक करना चाह रहे हैं. अगर आप है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए हो, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे बाद भी अगर आप जाते हो तो आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट क्या है. तो मुझे इससे पता चलेगा अगर आप खुद के लिए इतना सोच रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे आओगे तो करोगे, राइट? क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंचना है ना. बिल्कुल सर, बिल्कुल. गेटिंग? जी सर, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. यस. नो वरीज. गाइस प्लीज कंटिन्यू.
Yeah. Any other doubt? Like if anyone is having a question from interview, they can ask like how to answer that question. Okay, ma'am. Actually, again, Fahim this side. Hmm. Yeah. So, my question is like the way in this whatever the act you played. So the way the person who was giving the interview, so the way he was relaxed, like is it okay? I mean, the way he was very calm and composed, it is yes, we must be calm and composed at these situations. However, my question is like sometimes like he was like I felt that he was fumbling at the question such as where do you see where do you see yourself in next 5 years, or what are your strong points and weak points. So is it okay to think, so, like will it create like some impression like that we are we have low confidence or something like this? No. So, you should ask for a time. Like if you don't know any answer or any answer of a question, then you should ask for a few seconds or few minutes to gather your thoughts, and then you can speak it. And the important thing is that you should do not use your casual language or slang languages there. You should be very formal. Yeah, you should be calm and composed with the professional attire and as well as the language. Just be formal at that time. You only say. Yeah. There was this, They are just checking Fahim, that how do you articulate your thoughts and give that with a correct approach to your in your interview. Excuse me, panel. The main मैं thing ये is भी we पूछ can take some time. Mhm. Yeah. Yeah, you can take some time, but just say this. Give me a few minutes or something, right? Shivakant sir want to say something, right? Yes, 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 I got it. yes. So Yeah. देखो कुछ नहीं करना होता है, आप जब जाते हैं ना, सो व्हाट ही सेइंग कि वो थोड़ा फंबल कर रहे थे जयंत, राइट? हाँ बट इट हाँ. वाज नॉट लाइक दैट। वो रिलैक्स थे, काम थे, बट ही वाज प्रोफेशनल, राइट? बट Hmm. हमारा जब व्हेन वी आर आस्क्ड समथिंग, सो इट इज नॉट, क्योंकि हम रट के नहीं गए हैं, सो वी कैन नॉट जस्ट स्टार्ट येलिंग एनीथिंग व्हाटएवर वी हैव, जस्ट कुछ हम पढ़ के जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं, वी कैन स्टार्ट और वी कैन जस्ट येल, राइट? बट वो नहीं करना है हमें, क्योंकि जब से आपसे कुछ पूछा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ सोचेंगे, देन अकॉर्डिंगली विल आंसर। Hmm. So taking pause, it's completely fine, or it looks professional also, right? थोड़ा ऐसा हड़बड़ी में नहीं बोलना है आपको। Fahim, are you getting? Fahim, am I audible? Yeah, yeah, yeah. Yes, sir. ठीक है तो Yes, sir, I got it. ओके। एक्सक्यूज मी पैनल। मेरा Yeah. एक सवाल ये भी था कि अच्छा इंटरव्यू में क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं तो पूरा अच्छे से पता चल गया। मैं जानना चाह रहा था पोस्ट इंटरव्यू स्किल सेट्स में आप लोग कुछ सजेशन या गाइडलाइन या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वी स्टे नोटिस्ड या हम अप्रोप्रिएटली आगे बढ़े कि वी आर रियली रिमाइंडिंग द इंटरव्यूअर टू कंसिडर अस ऐसा लाइक what should be the post interview skill sets if you would like to throw some light regarding that. Thank you. See, with the interview, most of your job is done. Post interview, you can check or you can follow up few times if you want. Otherwise, post interview, it's on the interviewer and the company. Understood, ma'am. Any other question? हेलो मैम, मीरा जाली Yes. बोल रहा हूँ। Yes. अच्छा जब इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया तो वो तो बात Hmm. अलग है। मान लो कभी Hmm. सिलेक्ट नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक मैंने ऐसा किया, दूसरी कंपनी में जाकर अगर ना करे तो वो कैसे पता चलेगा? क्या ये मैंने मिस्टेक किया था या उससे फीडबैक क्या हम लोग ले सकते हैं क्या?
मेरे के अंदर ऐसा आपने क्या देखा जो आप मुझे सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा टाइप मतलब फीडबैक क्यों सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा टाइप का? Hi, Miraj. So it's not important if you get selected in an interview or you don't. After the interview, you are always free to ask for feedbacks. So there is no one better than the interviewers that have taken your interview, and you can right away ask for a feedback, and they'll tell you properly what you should do I and what you think should not. when the interview is going on after that, on that time only, or we need to, like, how we'll connect them After the interview, you can ask how did the at the interview same went, or if there time. is some feedback Yeah. for me, could you please give me the feedback in a polite way? You can ask such questions. Hmm. Yeah. उसी टाइम? हाँ, जी उसी टाइम। अब सिलेक्ट नहीं हुए ओके हो ओके फिर तो आई थिंक आप कनेक्ट नहीं कर सकते ना कंपनी को जाके कि आपने मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं ओके किया। ओके 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 ओके। हाँ वही। तुरंत बाद वो आपसे पूछेंगे भी कि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछने के लिए, तो आप कंपनी के बारे में या अपने इंटरव्यू का फीडबैक दोनों चीजें पूछ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। सॉरी, सॉरी, प्लीज रिपीट करिए। अगर वो लोग नहीं पूछते हैं तो मैं अगर कैसे स्टार्ट करूँ? क्या वो जान फीडबैक देने के लिए खुद से ही बोलो, प्लीज मेरा हाँ जी, इंटरव्यू आप के बारे में उनसे आप फीडबैक पोलाइटली दीजिए? खुद से पूछ सकते हैं कि आपने जो इंटरव्यू लिया है उसके बारे में कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें तो। एकदम लास्ट में। जी हम्म। एकदम लास्ट में। कि हाँ वही कि मुझे क्या और इम्प्रूव करना चाहिए या क्या को लगता है, बस उतना ही। एनी अदर क्वेश्चन? Hello, ma'am. यस। Ma'am, I'm Niharika. I want to ask you that when we are preparing our CV or resume, then we should mention about our disability or not. So for mentioning about your disability is not mandatory. We should, and you should not mention at the top also. If you want, you can mention at the last of your resume in last line, but not mandatory. Purpose for asking this question is that after seeing that the person is disabled, they Mm. immediately reject or they think something or and after that they sometimes reject. So Yeah, what? that's why saying no, don't mention at the top. If you want, you can mention at the last line or leave. I think. Shivakant, so what do you say or what you guide? तो माय सजेशन इज कि सम टाइम इट वर्क, सम टाइम इट डज नॉट वर्क। सो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब आप रेज्यूमे बनाते हैं तो पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता होगा। तो अभी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज स्पेशल वैकेंसीज निकलती हैं कि हम इंक्लूसिव हायरिंग कर रहे हैं, राइट? अगर वो वाला केस है तो देयर यू कैन मेंशन। अगर आप कोई लेटरल Mm. हायरिंग में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे कोई एज सच नहीं लिखा हुआ कि पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी वाले हैं उनको ही हायर कर रहे हैं, तो गो विथ योर स्किल सेट। क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली अगर आपका वो जो रेज्यूमे में जो भी वो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग इफ यू आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, जब इंटरव्यू पे आप जाते हैं देन यू आर ओपन एंड यू कैन टेल। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीम लीड इन बिजनेस ऑपरेशंस इन अ स्टार्टअप, राइट? तो उसमें क्या होता है, उसका इंटरव्यू का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल क्योंकि काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। मेरा रेज्यूमे मैंने आई हैव नॉट मेंशन दिस कि आई हैड दिस इशू। तो मैंने इंटरव्यू के लिए दिया और माय सीवी गॉट शॉर्टलिस्टेड। आई आई वाज इंटरव्यूड, ऑनलाइन इंटरव्यू था इनका, एंड वर्चुअली हम लोग कनेक्ट हुए एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। देन ही मतलब लास्ट में मुझे ऐसा आया कि आई शुड टेल हिम बिकॉज उनको पता नहीं चला, बिकॉज इट वाज नॉट टेक्निकल। तो एनवीडिया वगैरह तो ऑब्वियसली नॉट, तो बस स्क्रीन पे बोलना था एंड माय वीडियो वाज नॉट ऑन, सो एवरीथिंग वाज लाइक फाइन। सो बट उन्होंने मुझसे फिर लास्ट में मैंने खुद से बता दिया कि दिस इज द इशू। वो थोड़े से फिर वो डाउटफुल हुए कि आप काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। सो इन दैट केस वी कैन डेमोन्स्ट्रेट आवर स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड ऑल। सो मैंने क्या किया था मैं अपना बताता हूँ। मैंने उनसे पूछा, आई वॉज इन बैंगलोर, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ पे है। दे टोल्ड मी कि वी आर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने उनसे बस टाइम लिया कि मैं आपके से मिलने कब आ सकता हूँ। उन्होंने मुझे टाइम दे दिया कि मंडे आ जाओ आप। मैं मंडे गया था उनके पास। आई कैरिड माई लैपटॉप,
जिसमें मेरा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर था। एंड वट एवर वो टेक्निकल टास्क उन्होंने मुझसे बोला था मैंने सब करके दिया, एंड लाइक सेम डे आई गॉट द ऑफर लेटर। तो इट डिपेंड्स। निहारिका, मेरा शायद कुछ सेंस बन रहा होगा, राइट? आई थिंक यहाँ पे मतलब मेन होता है सेल्फ एडवोकेसी। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपको लास्ट में अपना आप क्या कर सकते हो, क्या आपकी कैपेबिलिटीज हैं, वो आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक इतना है नहीं कि मैम। आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज से हो, बट आप अपना सॉल्यूशन क्या कैरी करते हो, जैसे अभी सर ने बताया, वो आपको सेल्फ एडवोकेसी करना पड़ेगा वहां पे। यस मैम। Excuse me. I'd like to connect with Shivakan sir. Sir जी, तो इसका मतलब आपने definitely might क्या, have व्हाट्स योर been. नेम? नियोंक, राइट? हाँ जी सर। आप एक काम करिएगा, श्वेता से मेरा नंबर ले लीजिएगा, विल कनेक्ट लेटर, है ना? Sure sir, thank you. हाँ, आप कॉल कर लीजिएगा मुझे। Are you in the WhatsApp group now? जी मैम। Okay, you just can DM me. I'll connect with you. Right, thank you ma'am. Okay. Okay. Any other question? Don't hesitate, guys. If you have any question, you're open to ask. श्वेता, you can You can proceed have. with other session now. Yeah. Team. I think Akshat and all. Can you tell the other team to join? Ma'am, team B is already Okay, here. sir. Yes, ma'am. Okay. So who is from that team? Can you just Team name? B, we have No, to no. present the Any grouping one session. person name who is monitoring. Who is POC of Ma'am, Team B? my name is Hi, Nikhil, ma'am. and I will be sharing my screen, Yeah, Nikhil. Okay. Okay. and Yeah, my I'm go ahead. teammates are POC. joining. Okay. Okay. Hello, am I audible? Yes, yes, you are. Hi, ma'am. Team B POC is Shruti. Like it's me. Yeah. And Nikhil will be sharing the PPT, and our like topic is how we can groom them. Yes, yes, sure. Yeah. Shant, can you please go on? Yeah, sure. So, Nikhil, can you click on the present? Okay. So everyone is here from your team? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, Yes, then ma'am. continue. So Okay, my screen is continue. visible. Yes, yes. Okay. Okay, so, ma'am, can we start? Yeah, go ahead. Okay, hello everybody. Welcome to our interview grooming session. So today is not about changing who you are, but today is about helping you present your skills with confidence, right? Interviews are not about perfection. Interviews are about clarity and calm communication. By the end of today, you will know what interviewers are looking for and how to show your best self. So, like, there is a quick question for you guys. Like, who feels nervous before the interview? I mean, like the previous meeting that you guys were engaging with other team members. So I was seeing a lot of questions regarding the post interviews and how to, handle the interviewers' questions. So, like, how many of you feel nervous? Like, any volunteers? Anybody? Sir, this is Nyonyok again. मेरा क्योंकि Yeah, कभी hi, इंटरव्यू hi. हुआ ही नहीं है, Okay, so okay. that obviously gives me that nervousness already क्योंकि Okay. yeah. So don't worry. Today our grooming session will help you. We will try to help you a little bit of confidence and how to give your answers with clarity and confidence so that you don't feel that nervous. So yeah, can you move forward, Nikhil? So you already have education, skills, and now you're building your resume and interview practice. Many people still get rejected not because they are bad, but because the interviewer cannot see their strength clearly. This happens when answers are confusing, voice is too low, or we panic. Like example, imagine you are a good worker, right? And but you don't explain yourself properly. Interviewer thinks maybe this person can't do the job. So our job today is to show your ability clearly. Uh, Nikhil, can you move forward?
And this is the most common interview observations that we see. That some common things that we notice in interviews are good knowledge but weak explanation, nervousness, answer without structure, underconfidence, and confusion about disability questions. These are not personal problems. These are training points, right? Like learning a skill, practice makes you better. Can you move forward, Nikhil? So the good news is everything is we will discuss today is learnable, predictable, and independent of any disability. Interviews reward honesty, preparation, calm communication, and effort. They will not see like if you are lacking. They will not see that if you have any kind of disability or if you are struggling somewhere with that. But they will see that confidence. They will see that are you capable or not, or do you have the potential to do the job, or how much skills and everything you are contributing to the organization. Right? Can you move forward? Yes. So what grooming actually means? Grooming is not changing who you are or not becoming fake or copying others. Grooming is actually communicating clearly, presenting your strength better, staying calm under pressure, and handling interviews professionally. Grooming improves how the world sees your ability. Nikhil, move forward, please. So our phase two would be the core grooming skills, like what you will learn today. Oh, yeah, move forward, please. So today we will learn how interviewers think and evaluate, how to speak confidently even when nervous, how to structure answers clearly, how to handle HR and technical questions, how to discuss disability professionally, and how to build calm body language. This session is about skills, not personality. Move forward, please. So, what interviewers actually looking for? Interviewers will check, can you explain what you know? Are you honest and clear? Are you willing to learn? Can you stay calm under pressure? Interviews do not expect perfect answers, fluent English, or zero nervousness. Interviewers are are conversation. Interviews are conversation, not exams, right? So basically, no, you don't have to move forward, Nikhil. Just yeah. So basically, first question, as in the mock interview as well, when Jayant was presenting, the question was, "Tell me about yourself and why should we hire you?" So the interviewer here is not looking for the perfect answer. They are looking for your skills and how can you contribute to their organization and how confident you are. And first and foremost, very important skills that you must possess is how good communication do you have. So it is very important that you communicate in a very clear and onto the point. You should not just makes things complicated, and you should make your answer very clear and simple rather than making it complicated. Right? And they will also not expect you to have fluent English. They just expect that you are able to communicate freely and you are able to communicate them in such a way that they are able to understand what you are saying. And of course, they will also not expect that you will be like 100% confident. There will be a little bit of nervousness. So, Neon, that one thing that you were saying that, you never gave an interview and there will be a lot of nervousness. That's fine. That is applicable to everybody. Even when I also give an interview, I also feel nervous. But that is also fine. You need to learn how to balance things up in an interview, and you also need to learn one thing, that interviews are conversation. These are not exams. So if you will treat it like a one-on-one conversation, it will be much more better for you. Next slide, Nikhil. Prabhat, can you? Hello. Okay, am I audible? Yeah. Yeah, yeah. Okay, so I'll talk about confidence. So most people think that confidence is something you're born with, but that is not the case. In interviews, confidence is not personality, it is behavior, and behavior can be learned. Confidence is not about speaking perfect English, it is not about being loud, it is not about pretending you know everything. Real interviews में confidence is very simple. Confidence simply means that speaking slowly, taking pauses between your answers, breathing properly, and giving yourself a permission to think. In fact, one of the biggest mistakes candidates usually do is they answer too fast. Fast answers basically create confusion. Slow answers create clarity. Let me tell you something very important.
In interviews, an interviewer does not reward speed, they reward clarity. If a question is asked and you don't answer immediately, that is not weakness, but professionalism. A confident candidate may say that, let me take a moment to think. This one sentence shows three things: that you have honesty, calmness, and control over yourself. Another powerful line could be, you can say, based on my understanding, I may not know everything, but I know this. These lies protect you from panic and give your brain a time to organize thoughts. Now, I want all of you to understand something very important. Nervousness is normal. Your body reacting means the interview matters to you. But panic is optional. Panic comes when we fight nervousness. Confidence comes when we manage it. So, over to next slide, Nikhil. Now I will tell you how to structure your answers clearly. Many candidates lose interviews not because they don't know answers, but because interviewers cannot understand their answers. Knowledge in your mind is useful, but knowledge in a clear structure is what gets you selected. To solve this, we use a very simple and professional method: situation, action, and result. This means that number one, you have to explain the situation. Second, explain what action you took. And third, explain the outcome. Let me show you with an example. For example, an interviewer said, "Tell me about a challenge you faced." Without structure, answers become long and confusing. But with structure, I will tell you how you should answer this question. You can say, for the situation part, during my college project, I found it difficult to speak during group discussions. Now, what will be the action part? I started preparing points before meetings, practiced explaining my ideas to one of my colleagues or my peers. Now, if you go to the result part, you will say, gradually, I became more comfortable and was able to communicate clearly with my team. This answer is not long, but it is quite complete. This structure is also useful for questions like, tell me about yourself, uh, what are your strengths, what challenges have you faced, describe a difficult situation. So now, Shruti will help you answer. Over to Shruti. Hi Next slide. guys. Like, do you have any questions till now? As like we have understood what are interviews, like how to give the answers in confidence, how to structure the answers confidently. So, do you have any questions regarding this? Like Or basically, we discussed three things till now, like what interviewers want and how to give your answer with confidence and how to structure your answer clearly. So if there are any problems or any questions that you have, so you guys can, are free to ask. So at least we need this session to be interactive and learn with impact, very impactful and learning with learning. So any questions, anything? Sir, Nyonyok this side again. Yeah, hi, Neon. So, uh, based on my understanding from the Mm-hmm. explanation that sir has given, we have to structure our answers in a manner of a situation, action, and result. Yes. But I yeah. I slightly beg to differ that this also applies to the introduction. So, what are we to talk during our introduction? How should our introduction look like? Okay. So, for example, if somebody is asking you, like, tell me about yourself, right? This is the first introduction question that any interviewer will ask you, right? So, the interviewer is not interested in your personal story. Okay, they are just interested in what are you offering them, what skills are you offering them, what are the contribution that you are going to give it to them, Yeah, right? I'll be So, covering all these things. I'll be explaining in the brief. yes. Right, Shan, So please go on. yeah, should I move forward? Yeah. So basically, if the interviewer is asking you, like, tell me about yourself. So the
your basic general information would come first, right? That you are neon, you have done your graduation, and this is your minimum basic education quality, your qualification. And then after that, what you have to do, you have to explain your skills. And if you have any past internship experiences, or projects that you have done in your college, or you have participated in any societal work or anything, that you have to explain that experience according to the job description or the job roles that they're looking for, right? For example, you can relate your project skills with that. For example, you can say that in one of my project, I've learned how to handle a team and how to work under pressure, under tight deadlines. So the interviewer will have this mindset that this candidate knows and have some kind of an experience how to done the work under pressure, under tight deadlines. And he had also handled a team. So he will see three things: time management, pressure management, and pressure management, and how the leadership quality that Neon has, right? So you have to present your skills in that manner, that in a way that it is directly or indirectly contributing to their organization or to their organization goals. Right. So are you able to understand what I'm saying? First, you need your basic information, then you have to explain your past experiences, any past experiences. It could be your society, it could be your projects, it could be your internship experiences, and then you have to make the skills out of those, that what you have learned and what skills that you think that you have gathered from that particular project, and then directly related with the organization goals or the uh, requirement they are looking for. This is the structure that you should follow in this first question, and you need to be very clear and on to the point. You don't need to make things complicated. Thank you, sir. Yeah, do you have any problem, or it's, you are free to ask if you didn't understand something. You can ask 100 times. We'll be very much okay to give you the answer 100 times again. So hello. Sir, मैं Hello. बस एक demo answer चाहूंगा. That's the only thing requiring right now. Okay, so you wanted demo answer. Okay, okay, okay. It's not a problem. I'll give you a demo answer. Um, See, I'll explain you with the examples as well for this. Okay, so don't worry on that part. Right, ma'am. Sure. Yeah. So, see, as Ishant has explained you, and HR questions is not asked to judge you. They are asked to understand how you think, communicate, and behave at works. Okay. So, what HR questions are really about are basically tell me about yourself. The first and the foremost question, what you guys are like facing. Okay, so what are your weakness and strengths? What are your challenges you have faced? They are not looking for the perfect answer. They just want to see whether you can explain yourself clearly, whether like you are honest, or whether you are willing to learn or to improve or not. These things the interview wants to check. This, as Prabhat also said, that interview is just a conversation. It's not like that, it's not an exam or something. Okay, so how to answer the question that tell me about yourself? Always keep the answer short, professional, and work focused only. Okay, so as we have explained in the previous slide only, the SAR approach. Okay, so you have to present your skills, you have to be presentable, then your skills and the learnings. So for example, as you have, like, I have completed my graduation in commerce. I have basics knowledge about accounts and MS Excel. Like, about yourself only, but for one most important thing, that you don't have to include about like in the tell me about yourself question. आपको अपने childhood stories नहीं उसमें डालनी है कि like for my past trauma was this. No, like in the starting you don't have to like put your childhood stories there, your personal problems. No, you don't have to like mention all these things, and about the disabilities as well. Okay, like I am currently improving my communication skills. These things you can mention, that whatever like the mistakes
Like the minor mistake for the role you are applying, the mistakes related to that particularly you have to mention there. Like if they ask like how to talk about your strength basically, so your strength should always be connected with the work behavior. Like what is the work behavior you will be like showing to the company. Okay, so it shouldn't be generic that I am honest and hardworking. It should be like one of my strengths is patience. During my trainee, I took time to understand tasks properly, which helped me in avoiding mistakes. This kind. It's not like that I'm hardworking or like I do a smart working. No, don't throw the generic statement. You have to be specific, and you have to pack up with the relevant example as well. Okay, so Neon, you asked me for any example, right? So I'll give you two examples, one of fresher and one of experience, right? For example, if somebody is experienced here, so that will be helpful for them as well. For example, if you're a college student, that you can start your answer. I'm a recent graduate with a strong interest in learning and applying practical skills in a professional environment during my college education. Now here's the part where your college experience is coming into play, right? And how you will relate it to your skills. I worked on multiple academic projects where I gained hands-on experience in research, teamwork, and problem solving. Through these projects, I learned how to understand requirement, plan tasks, and deliver outcomes with deadlines. I also developed the ability to explain my work clearly and collaborate effectively with team members. While I'm at the beginning of my career, I'm proactive, open to feedback, and eager to learn from the real world challenges. I'm looking for an opportunity where I can apply my foundation knowledge, build practical experience, and grow as a professional. So, if you will look into this answer, if you will see into this answer, you will realize that, first of all, you have experience you have explained your college experiences, right? Of course, that you must have your experiences, so you can explain your college experiences along with the skills that in this answer, as I just mentioned that through these projects, I learned how to understand requirements, plan tasks, and deliver outcomes within deadlines. So you have also included the skills in this particular answer as well, along with the experiences that you are telling, right? And then you have also said that I also developed the ability to explain my work clearly and collaboratively, effectively with my team members. So here in this answer, you have also mentioned that how effectively you are able to communicate with your team members and how you are a team player. So this is the type of an answer that you can, give it in your interview when you are a fresher, right? When you are a fresher, even the interviewer knows that you don't have any corporate experiences, but they will expect some kind of accountability from you. From accountability, I means that you have done something in your college. Any internship, any project, any, societal work. So according to that, they should know that are you willing to work? Do you have that will or the potential to work? Skill is not an issue. Skill are trainable. If you will be hired in a company, they will train you. But they look for the potential in a fresher. They look that if that person has the potential or not. If that person has done some work in his college or not, apart from the corporate experience, because of course he's a fresher. And if somebody is a professional, for example, I have 2 years of experience in digital marketing. So what I used to say when I was in corporate, like I am a digital marketing professional with around 2 years of hands-on experience working across performance marketing and content-driven campaigns. In my current role, I've worked on managing social media campaign, paid ads, basic SEO, and campaign analysis, where my focus has been on improving reach, engagement, and conversation through data-driven decisions. So basically, if anybody here has some kind of experience, maybe they can be BTech students, they can have a digital marketing experience, they can have a sales experience. So they need to include their experiences and what they have learned, and what skills do they have, and also their achievements and the rewards that they have gained in their experiences. So that will also help a lot to give this answer, like tell me about yourself. So are you clear with this now, Neon? Definitely. Thank you, sir. Yeah. So yeah, now we can move forward. uh, like we haven't covered the weaknesses. This is also one important question. If interviewer asks that tell me about your weaknesses, never say that I don't have any weaknesses. It gives a negative impact. Okay, everyone has weaknesses.
saying that I don't have any weaknesses creates a negative impression. Admit your weakness and show the improvement. Like, for example, like if I give you an example, so earlier I used to feel nervous while speaking in interview, and now you can say that now I practice mock interviews and my confidence is improving. Okay, so the best combo is weaknesses plus learning is equal to maturity basically. Okay, hello, am I audible? Yes, ma'am. Right, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Yeah. So do you have any questions till now, like, and are you guys are like clear with the examples that how you have to present your weaknesses, your strengths, and like the important question the of tell me about yourself. Yeah, how to formulate your answers basically. So, Yeah. ma'am, is it that when we are doing an introductory, you know, like we are introducing ourselves, उसी समय में हमें हमारे स्ट्रेंग्थ के बाद वीकनेसेस भी थोड़ी मतलब हल्के झलक में रखना है No, या it's not. No, 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 no. Basically, Like if when the the interviewer is asking you, yeah. Sorry, Shruti, yeah, please continue. या सो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस करेगा ऑब्वियसली जब आप अपने बारे में बताओगे, तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो हर इंटरव्यू में होते ही होते हैं, लाइक 99% और मे बी लाइक 100% ही ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, ये आते ही आते हैं. यू हैव टू टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड weaknesses, and everyone has some of the strengths and some of the weaknesses. Okay, so according to that, you have to explain. But the point is, many candidates, what they do that they feel overconfident, or like at the point of time that they are saying that I don't have any kind of weaknesses. Like थोड़ा बहुत ही ऐसा issue है, but ये मेरी weakness नहीं है. It's not like that. You don't have to give the vague Excuse me, ma'am. answers. Yeah. मैम सॉरी फॉर इंटररप्टिंग. मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होता है उसी में Hmm. हमें मतलब वीकनेसेस का जिक्र करना है या नहीं करना है, और अगर नहीं करना है तो हमारा मतलब इंट्रोडक्टरी स्पीच में हम रिसेंटली हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ से हमने क्या सीखा, क्या करा हाँ, कॉलेज के आप दौरान. अपने उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अबाउट योरसेल्फ में आपको प्रोफेशनली रहना है काफी, कि हाँ, तो आपका उसमें आपने हमारा कहा था. वीकनेसेस का कोई मेंशन नहीं होता ना. नहीं, आपको वहाँ अपनी वीकनेसेस कुछ भी ऐसे मेंशन नहीं करना. आपके बिकॉज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ ना इतना बेसिक क्वेश्चन होता है. सी, अगर आप मेरे पास आओगे तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करोगे, तभी तो मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूँगी, हम्म. राइट? तो आप मुझे बताओगे कि मैंने यहाँ तक स्टडी कर रखी है. लेट्स से कि अगर आपने सपोज़ आपने बीटेक कर रखा है, तो आई आई वुड आस्क कि आपने टेक्निकल स्किल्स भी आपने क्या-क्या सीखी है अपने बीटेक के टाइम पे? अगर आपने आपने कोई टेक्निकल स्किल्स बोली मेरे को, फिर मैं आपसे ऑब्वियसली उसी क्वेश्चन में ही आपसे अंदर आंसर करूंगी कि उस स्किल पे बेसिस आपने कोई प्रोजेक्ट करा है. आंसर यस या नो में होगा ऑब्वियसली. अगर करा है तो कहाँ करा है ओके, आपने जो भी करा है आप मुझे एक्सप्लेन करोगे. उसके बाद ही कन्वर्सेशन आएगा कि फिर उसके बाद आपने जो वो प्रोजेक्ट करा है तो आपके क्या क्या आपको उसमें चैलेंजेस आए थे. तो आपने अगर आपको लेट्स से टीम में कोई फाइट हुआ था, बहुत बेसिक होता है कि टीम प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ होता है, तो टीम में कोई फाइट हुआ था या फिर लाइक प्रोजेक्ट्स क्लैश हुआ था या समथिंग एनीथिंग, तो आप वो चीज़ मेंशन करोगे. फिर उसके बाद आप उसी में से बताओगे बेसिकली कि आप मतलब ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. आप उसी में से फिर एक्सप्लेन ये भी करोगे कि मैंने कैसे हैंडल करा था. एंड दैट हैंडलिंग पार्ट इज़ योर स्ट्रेंथ, कि आपने पैनिक नहीं करा, आपने उसको हैंडल करना चाहा. ओके, अगर कोई वीकनेस कोई अगर जो भी क्लैशेस हुआ था या कुछ भी हुआ था, वो अगर आपकी किसी वजह से हुआ था या आपने कुछ अदरवाइज रिएक्ट कर दिया था, दैट वुड बी योर वीकनेस. Maybe like sometimes what people are doing, the procrastination is their weaknesses. They know that they have to do, and but still they procrastinate their work. पता क्या if the interviewer can ask you this himself or herself that if you have any weaknesses, and then you can answer it directly, but you can also formulate an answer where you are showing that yes, I have weaknesses. For example, as Shruti said, that if somebody is procrastinating a lot, but you can also make it into a very positive answer. How are you working on your weaknesses, which is a very positive way of answering any question in an interview, because this will tell the interview that you are actually working towards your weakness. See, everybody we are humans, all right? Everybody has flaws, everybody has that pros and cons things, right? So, and strength and weaknesses. So if I have any weakness and if I'm working towards it, and how
I am working towards it, and if I have improved even a little bit, that is also a very good thing, and that is the interview will see that, will notice that. So you can also say that, for example, I used to procrastinate a lot, but when I was working into a college project, so I used to create a timetable for myself, and I used to have a scheduling for each and everything. I used to break my tasks into smaller tasks so that I don't feel the pressure at once, and I will not procrastinate as well, and I will do my task on time. So the interview will see that that this person has the weaknesses, but uh, he also improved himself or herself regarding his or her weaknesses, and it's commendable. So yes, this is how you can also formulate your answer. Like, are you getting my point, Neon? नहीं सर मैम मेरा मतलब बाकी सब पूरा क्लियर है सॉरी फॉर Mm-hmm. क्रिएटिंग दिस एक्सट्रीम कंफ्यूजन बट No, आई no, no, एम it's एक्चुअली fine. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ इंट्रोडक्टरी है ना सर मैं मतलब कि Mm-hmm. हाँ मेरा Introduction में you don't have इंट्रोडक्टरी to say सब your मीन करती है weaknesses. हाँ, हाँ तो इसके introduction में मतलब you don't. Mm-hmm. सर मैं जहाँ तक समझाऊँ इसका मतलब इंट्रोडक्टरी स्पीच अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता के फिर अपने रिसेंट में क्या करा अगर कुछ उस Mm-hmm. दौरान कुछ करा है साथ ही साथ आपने उससे क्या सीखा है इतना हाँ, ही क्या सीखा है? तक सीमित रहता है ना आपका Always इंट्रोडक्टरी Yes, स्पीच yes, हाँ जी, हाँ जी, your हाँ जी. projects and achievements. You always हम्म. have to discuss about those questions. See, बस what उनको ये होना चाहिए इंटरव्यूअर्स को कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, आप वैल्यू दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आर यू राइट अ सर दैट वैल्यूएबल कैंडिडेट। उनको राइट वैल्यू सर है, अगर आप में वैल्यू दिख रही है, आपके आंसर में वैल्यू दिख रही है, देन दे विल बी इम्प्रेस। अगर आपके आंसर में वैल्यू नहीं दिख रही कि यस आई एम नॉट एबल टू सी एनी वैल्यू इन दिस कैंडिडेट, देन उनको पता चल जाता है। सो यू नीड टू क्रिएट दैट वैल्यू इन योर आंसर। दैट वाज द ओनली कंफ्यूजन सर थैंक यू yeah. हेलो सर क्वेश्चन है पूछू Yeah, please पूछिए पूछिए. जी मेरा नाम मीरा जली अगर इंटरव्यूअर जैसे मेरे अंदर मेरा एक वीकनेस है वो है मेरा आई प्रॉब्लम हम्म. मेरे को फोटोफोबिया है दिन में अगर जाऊँ तो मुझे वो जहन्नम लगता है सेम चीज मेरे को एनकरेज करता है मेरे अंदर आग लगाता है आगे बढ़ने के लिए इंटरव्यूअर अगर पूछे तुम्हारा वीकनेस क्या है मैं ये बताऊंगा क्या ये जो भी मेरा प्रॉब्लम है पर अगर पूछे तुमको कौन सा चीज इंकरेज करता है मैं तो सेम ही चीज बोलूंगा क्योंकि यही मुझे इंकरेज करना है तो I think ये क्या weakness मेरा में गलत सोच है या मुझे इसको कैसे आंसर करना है आई थिंक वीकनेस में कभी भी डिसेबिलिटी को नहीं बोलेंगे कि हमारा ऐसा Yes, disability. डिसेबिलिटी है। I mentioned it in the starting as well. आपको हाँ, weakness अपने disability कभी नहीं बोलना. Yeah, we will come to that तो point in later in this presentation. That you are talking ओके about ओके your disability, the in your weakness. You should never तो हो take your सकता है मेरा disability as a सोच ही weakness. गलत है ये इसको मैं जो अभी मेरा No, it's वीकनेस not सोच about रहा हूँ thinking. It's about how we groom up and all. So disability can never be your weakness. In interviews, you should never show your disability as a weakness. You need to show how with that weakness and how are you still improving in your skills and how much confidence you are. You need to show that, not आई that, थिंक not the बेटर part. भी कि आप वीकनेस में क्या क्या आप बता सकते हो, कैसे आप आंसर कर सकते हो, मेरा वो जैसे मैंने आपको बेटर। बताया ना अभी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपको लगता है ये वीकनेस, विच इज वेरी नेचुरली नेचुरल है, किसी को भी लगेगा, ठीक है, मैं भी होता, मुझे भी लगता। तो मैंने जैसे अभी नेॉन को बताया कि आप कैसे अपनी वीकनेस को भी एक पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लगता है, बट आपको इंटरव्यू को ये दिखाना है कि यस ये मेरी वीकनेस है, आई एक्सेप्ट इट, बट मैं इस चीज को इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, और उस इम्प्रूवमेंट के लिए मैं क्या स्टेप्स ले रहा हूँ, क्या कोर्स ऑफ एक्शंस ले रहा हूँ, क्या प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, आपको वो भी बताना होगा। तब जाके वो चीज एक पॉजिटिव पॉइंट पे निकलेगा। आप समझ रहे हो मेरा? आज आपको पता है कि मेरी ये वीकनेस है, बट वो इंटरव्यू हम्म। आपसे ये देखना चाहता है कि आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करा है, आप उस प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या आप में कोई इंप्रूवमेंट आई है नहीं आई है, अगर इंप्रूवमेंट आई है तो वो रिजल्ट उसका निकला है या नहीं निकला है, वो चीज वो देखना चाहता है। क्योंकि वीकनेस सब में होती है, बट
उन्हें वो चीज देखनी है कि आप में वो विलिंगनेस है वो इम्प्रूवमेंट करने की। एंड जैसे मतलब मेरे को एक कंफ्यूजन है, लाइक अगर मैं बोलूं कि मैं किसी चीज काम को करने में टाइम ज्यादा लेती हूँ, हाँ ऑन द जी। अदर हैंड सेम लाइन में मैं बोलूँ कि क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल्स में जाती हूँ इसलिए मेरे को टाइम ज्यादा लगता है, आई विल इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग द टाइम, सो हम्म। वीकनेस भी हो गई स्ट्रेंथ भी हो गई, राइट? यस। मैम ये सेम चीज मेरे साथ भी होती थी। आई गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जांपल दैट आई यूज्ड टू फेस द सेम प्रॉब्लम। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड यू हैव सर्टेन डेडलाइंस, राइट? आप मेरे पास एक हम्म। डेडलाइन है कि मेरे को आज दिन का टारगेट इतना करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को 50 कॉल करने हैं एंड हम्म। मैं हर एक क्लाइंट से अगर मैं बात करूँ, डिटेल में बात करूँ, टू गेट हम्म। मोर इंसाइट फुल इंसाइट। इंफॉर्मेशन, राइट? हम्म। बट वी ऑल्सो नीड टू सी एट द एंड, हमें एट द एंड यही देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव हो रहा हाँ, है। टारगेट पूरा होने हुआ। टारगेट होना हम्म। नहीं चाहिए। तो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट में। फ्लेक्सिबिलिटी इज काइंड ऑफ अ स्किल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर मुझे ये चीज़ है कि हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ, बट वो अगर मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ तो वो यूजफुल भी होता है, बट फिर वो मुझे हम्म। एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि यस आई नीड Yeah, टू। you फॉर have to एग्जाम्पल be अगर मैं किसी क्लाइंट से flexible. बात कर रहा हूँ तो मैं एक स्टॉप वॉच लगा दूंगा कि हाँ मुझे इससे ज्यादा बात नहीं करनी है इतनी हम्म। टाइम में ही। फॉर एग्जांपल मेरे को 10 मिनट के अंदर ही अंदर इस कॉल में सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन लेनी है और इस कॉल को रैप अप करके अपने पोर्टल में ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर देनी है। ज्यादा से ज्यादा मैं 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइमर दे सकता हूँ, मैं 10 मिनट को 20 मिनट नहीं बनाना चाहता। तो आई नीड। Telling the weakness and telling the solution to improve that. यस मैम। Yeah, see, basically, you have to be specific and you have to be flexible as well because, anyways, you are working for the organization and organizational goal is need to be achieved. Okay, if like if see if you will be running behind the perfection only, what thing will be happen is like in the one day task, if you will not be able to complete the whole task in one day, it would be like आपके पास बकल अप हो जाएगा एंड आपके लिए वो अगले दिन के लिए भी आपके लिए एक और बर्डन बन जाएगा। तो आपको वो चीज भी अपना देखते देखकर चलना है कि मेरे को सारी चीजें भी अपना खत्म करते चलना है काम भी। Right. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप परफेक्शन बिल्कुल भी ना रखो, यू हैव टू मेंटेन बैलेंस। मैम चाहे आप सेल्स में हो चाहे आप धीरे इवन धीरे आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा, ये वाली चीज आप साथ साथ कर भी लोगे बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर। True. सो आप वो चीज साथ साथ फिगर आउट भी करोगे कि कैसे कर सकते हो, एज ईशान सेड अबाउट हिज like with his example that he like used to put the timer. Okay, so Mm-hmm. maybe timer can also work for you or maybe some other things can work for you. मैम वो Mm-hmm. ये चीज सब में एप्लीकेबल है, चाहे आप कोडिंग कर रहे हो चाहे आप सेल्स में हो चाहे आप डेटा हैंडल कर रहे हो। यू विल हैव टारगेट्स एवरीवेयर, राइट? एंड यू नीड टू True, true. डिलीवर। तो Hmm. देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास इतना डेटा है और मुझे ये डेटा इतने टाइम में डिलीवर करना है तो मुझे कितना किस डेटा में काम मेरे को उसमें फिर मेरे को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये डेटा मेरे को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इसमें मैं काम करूंगा, फिर इस डेटा में मैं इतना काम करूंगा। अगर मैं लेस प्रायोरिटी वाले डेटा में ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ देन दैट विल बी एन इशू, राइट? तो फिर उधर मेरे को प्रायोरिटाइजेशन वाला एक एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। इफ आई एम इनटू कोडिंग, राइट, Right. तो मैं कोड Uh-huh. लिख रहा हूँ तो मेरे पास टिकट्स रहेंगी बड़ी सारी और जो मुझे एक Mm-hmm. में करना है, तो मुझे उसमें भी Mm-hmm. प्रायोरिटाइजेशन यूज करना पड़ेगा कि कौन सी टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ज्यादा बग आ रखा है, राइट? Mm-hmm. तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। और सेल्स में तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि टाइमर वगैरह होता है, तो प्रायोरिटाइज Right. टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी होता है कॉर्पोरेट में। Right. तो आई थिंक हम आगे पीपीटी को कवर अप कर यस सकते मैम, हैं। यस, यस। Yeah, And sure. last question, I have one short question that हाँ। गवर्नमेंट इंटरव्यू एंड कॉर्पोरेट इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या इंटरव्यू ही होता है या इस वो जो कॉर्पोरेट होता है गवर्नमेंट जॉब होता है थोड़ा डिफरेंट, ये अलग अलग पैटर्न है? क्योंकि मैंने कभी भी इंटरव्यू में कभी भी नहीं नहीं तो बैठा हूँ। कॉर्पोरेट इंटरव्यूज में बहुत ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इंटरव्यूज आर डिफरेंट एंड गवर्नमेंट इंटरव्यूज आर डिफरेंट, राइट? और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस जॉब रोल के लिए जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर में जा रहे हो, राइट, वो गवर्नमेंट रोल है, उसमें आपसे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे।
आपसे अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इनकम टैक्स रिलेटेड होंगे, ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पॉलिसीज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। More of a knowledge questions, हाँ, apply तो वो knowledge. और अगर आप कॉर्पोरेट में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जा रहे हो तो आपसे वो मॉडलिंग पूछेंगे, फाइनेंशियल आप कैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग करोगे, आप कैसे एक डेटा को एनालाइज करोगे, फॉर्मूलेस के बारे में पूछेंगे। मे बी आपको एक केस स्टडी दे दिया जाए, केस डेटा दे दी जाए, उसको आपको एनालाइज करके इंटरप्रेट करना पड़े, वो चीज़ डिफरेंट होगी। तो कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट आर बोथ वेरी डिफरेंट, प्लस आपके जॉब रोल में डिपेंड करता है। हर जॉब रोल का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अगर आपकी जॉब क्वेश्चंस आपके उसमें भी सेम रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब रोल में भी आपके बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और ये सारी चीजें वो आपका उसमें सेम रहेगा। बट आप जॉब रोल अगर आपका डिफरेंट है तो ऑब्वियसली जो जब टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं या आपका किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या जैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिया तो एग्जाम से रिलेटेड अगर वो कुछ चीज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड जाएगा। जॉब रोल हमेशा ऑब्वियसली मैनेज करता है बिकॉज मतलब मैटर करता है। अगर मैं आपसे जिस चीज के लिए आप आए हो मैं उस बारे में ना पूछ के आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछूं, ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू आंसर एंड यू आल्सो थिंक दैट मैं आया तो किसी और चीज का इंटरव्यू देना था बट मेरे से क्या क्वेश्चंस, ये तो रिलेट ही नहीं करा मेरी जॉब से। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे कम इनटू योर माइंड, राइट? तो बेसिक क्वेश्चन सेम रहता है बट हाँ इंटरव्यू ऑब्वियसली बाकी चीजें डिफर करेंगी करेंगी। जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये बेसिक क्वेश्चन होता है, ये सही रहता है, ये मतलब ये सेम रहता है हर जगह। ठीक है, कि व्हाई शुड वी हायर यू, या वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। ये जो बहुत बेसिक बेसिक जेनेरिक क्वेश्चंस है, दीज आर जेनेरिक क्वेश्चंस। ये जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिक रहते हैं आपके गवर्नमेंट में भी और उसमें भी। Because these questions are about yourself and the interviewer want to know about you because Hmm. they are hiring someone and they'll be paying someone, so they should find a value and they should find like that the person that whom I'm hiring is actually worth it or not. राइट, तो वो चीज बिल्कुल। और फिर टेक्निकल क्वेश्चन तो हर जॉब रोल के इसमें होता है, बट इधर हम जेनरिक क्वेश्चन की बात करें कि आपकी पर्सनैलिटी हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं, आपके आंसर्स कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं जेनरिक क्वेश्चन में। एंड इवन आप जब आपको पता चल जाएगा आप अपने आंसर्स कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगे, तो वो आपके टेक्निकल राउंड पे भी हेल्प करेगा। क्योंकि इवन बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई चीज आती होगी टेक्निकली, बट जस्ट बिकॉज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से आप बहुत नर्वस हो जाओगे, आप अपने आंसर को आर्टिकुलेट बेटर नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। राइट, आती Hmm. भी आप भूल जाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, these are very basic personality skills that everyone should have, Hmm. irrespective of the questions. Thank you. Yeah, can move forward, right? Any questions? Everything is clear, right? Hmm. Thank you. Thank you. Yeah, I think you can move forward with the Nikhil, PPT. please, next slide. See, another one more important thing is how you will handle the technical questions. Okay, so technical questions are also not asked to scare you. They are asked to understand what you know and how you are approaching the problems. Okay, so when you are answering these questions, you have to be like you have to speak slowly, think before you speak, and explain in the words as well. Okay, it's not like that jumping to the conclusion and like I know this skill and I this did this project. No, you have to be very specific and you have to think and speak because the interviewer will be asking the question with from these answers, whatever you are going to answer. Okay, so this is again another most important part of your interview. For example, like this is the function I use in the calculator, like calculate total. So first we have to select data, then we apply formula. These things like you have to do, and what kind of formula you are applying to calculate, and if you are adding, so what kind of formula you are applying in the Excel sheet. If not, then for anything, as you know that Excel is also like if I talk about the technical thing that Excel it is very common and very important as well in today's world, right? So for Excel there are multiple formulas, so you have to you just don't have to jump on the formula. You have to be specific and tell by step that like in the toolbar we'll be finding this and you have to be we have to go there. Sometimes what they are doing, sometimes they'll be like giving you the like they want to have a demonstrate there.
Okay. So speed is not important there, clarity is important. And when do you know, when you do not know the answer, okay, tell them clearly that I don't know this answer. So not knowing answer is also normal, but guessing or lying is create a bad impression. Because at the time of interview, as we covered in the previous slide, that like panic is like what happen is, आप उस टाइम पर आपको नर्वसनेस ऑलरेडी हो रही होती है, राइट? आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हो, बट अगेन होता क्या है, अगर आपने कोई गलत एग्जांपल, गलत आंसर दिया आपने, या फिर लाइक बेसिकली आपने झूठ बोला उनको कि हाँ मैंने इस पे करा है, जस्ट टू ग्रैब दैट जॉब रोल, आपने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने ये करा है। ओके, सो व्हाट हैपन एट दैट टाइम, अगर उन्होंने उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अप द स्टोरीज देयर, समवेयर इन द बिटवीन यू विल स्टक देयर। एंड ऑब्वियसली इंटरव्यूअर इज द पर्सन जो like इतने interviews लेता है per day के, they know that where the person is lying and where it is actually like the person have worked on the particular skill set. Okay, so you don't have to lie. If you don't know any skill, you just say that I don't know any skill, because everyone also don't know every skills, right? So like आप सच बोलोगे वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि हाँ एटलीस्ट द कैंडिडेट इज ऑनेस्ट। प्लस अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कहीं पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक योर टाइम, you can take your time, think, and then answer your question. It is absolutely okay to think for 30 seconds or 20, 30 seconds to formulate your answer and think. And if you don't know, as Shruti said, rightly mentioned, that you can simply say, sir or ma'am, I'm not clear about this situation or this answer, so I don't know. Right. But at the same time, ये भी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में ही ये बोल रहे हो कि I don't know. Then they will be like कि this candidate is underprepared. इसने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करी है, राइट? सो दो तीन क्वेश्चंस में ये चीज चलती है कि यू कैन से दैट आई डोंट नो दिस आंसर, बट नॉट इन एवरी क्वेश्चन. एंड if you are formulating your answer and communicating, make sure that you are not speaking too fast, but at the same time you are not speaking too slow. Both of them does not create a good impression. You need to have a balanced pace when you are speaking your answer, which is very important, and need to have clarity, right? If you And if do you not have, don't know, na, like you can say that I haven't worked on this yet, but yes, I understand the basics. I'm not fully familiar about this tool, but yes, I'm willing to learn. So these things, show your honesty and learning attitudes as well, and confidence to you and to the interview as well, that yes, this particular candidate is like have the learning attitude. It's not like that he is vaguing. कि चाहता तो बिकॉज वो वेग आंसर्स भी दे सकता था कि हाँ ठीक है, मैं मेरे को आता है और ये सारी चीजें, जस्ट टू फ्लॉन्ट देयर, बट नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, so सो can we एंड can move forward, I guess, Shruti? yeah. Yeah, So what please. you do not have to do in the technical, again, don't panic, and random answers आपको नहीं देना है, और आपको follow up questions भी like interviewer से पूछने हैं। Okay, yeah, hello, Nikhil, are you there? Yeah. Yeah, Nikhil, please move on to the next slide and please carry on. So, my name is Nikhil, and before we begin, let me ask you one simple question. How many of you have thought that I know the answer, but I can't explain it in interviews? So, this feeling is very common, I guess. And today, the previous session that you have listened to us, we are here to fix all that exactly. So, something important that I want to say is interviews are not basically exams. Interviews are basically conversations that you carry forward with your interviewer. And the interviewer not looking for any perfect English, not perfect confidence, not perfect body language. They are looking for clarity, honesty, and effort. They and one more thing, your disability is hello, someone speaking. निखिल, आपने Yeah, No, कोई स्लाइड मिस तो नहीं कर दी, और दिस इज योर स्लाइड ओनली ये बार? yeah. This is my slide. I'm coming to it. go ahead. No one is. So now let's talk something very powerful. Now I want to say.
In an interview, your disability is not your weakness. The problem is not having a disability. The problem is how we talk about it. You don't need to explain your entire life story. You don't need to apologize. You don't need to feel nervous. The rule is simple: be honest, be positive, and be short. Instead of saying because of my disability I have many problems, say this: I have disability, but I use tools and strategies to do my work efficiently, effectively. So the previous question that Miraj asked, that around when you give answers, you become slow. So my answer to that is, you need to structure your thoughts. Whether you take time, but you need to give correct answer basically, so that you can say, even if I am slow in giving the answer, but I am accurate. So interviews are not testing your disability, they are testing your clarity and confidence. And remember, you are not asking for sympathy, you are just showing your ability with solutions. Now for the next slide, how can you build a calm body language? Your body speaks where even when you don't. Good body language does not mean sitting like a statue, it means looking comfortable and calm. Sit properly, not stiff, not sleepy. Keep your hands relaxed, not hidden, not shaking. Eye contact does not mean staring, it means look attentive. And if eye contact is difficult, it is okay too. Now for online interviews, my teammate Prajwal will carry the presentation. So Prajwal. Hello everyone, good evening. So, when people hear the word body language, they think it is only about eye contact or facial expressions. But body language is actually about how comfortable and confident your body feels when you speak. So, as Nikhil told you about the offline interviews, now I am talking about the online interviews. For online interviews, imagine the camera as a person sitting in front of you. Keep the camera at face level, sit where your voice is clear, make sure the background is quiet. That's it, no fancy setup is required. And very importantly, the confidence is not about looking perfect. Confidence is when your body and mind are not fighting each other. So, Nikhil, let's move to the last slide. So now let's talk about some simple habit, that is the do's. So first one is be punctual. Always reach early for an interview. For example, if the interview is at 10 o'clock, reach there by 9:45. Why? Because punctuality tells the interviewer, I respect your time and I take this opportunity seriously. Second is carry resume and documents. Even if the interviewer already has your resume, carry it. Preparation creates confidence and confidence shows in the way you speak. Third is be polite and calm. You don't need big English or fancy word. Simple language, clear thought, calm voice, and that is enough. Now the don'ts. These are common mistakes. So first is don't dress casually. Your clothes send a message before you speak. Wear something clean, neat, and comfortable. Not expensive, just respectful. Second is don't use your phone. When you use your phone during an interview, the interviewer feels ignored. One interview is equal to one focus. And last is don't carry negativity. Never complain about your past job, trainer, or organization. Even if something went wrong, speak calmly and positively. Company hire people who bring solution, not complaints. And for the final message, let me end this by saying your confidence, preparation, and attitude define you, not your disability. And you are not here to ask for sympathy, you are here to present your ability. So that's it. Now, if you have any question, you can ask. Yes, guys, if you have any questions regarding anything, and you are free to ask. And if there are any certain thing that you didn't understand, so that as well. Guys, if there is any question, unmute yourself and ask. Like, being a visual impaired, what difficulties you face regarding this? You can Yeah, ask please, that guys, also. please. Anything. Yeah. Guys, if you have any questions, you can ask. Don't feel hesitate or don't feel shy. It's absolutely okay. We are here to learn only.
I think being a totally visually impaired, one difficulty they face is like, am I facing correctly to the interviewer or not? Okay. So how they can tackle that? Like interviewer, Mhm. I'm a totally visually impaired, and I'm not looking towards the interviewer, but looking somewhere else. Mhm. So what should I do to like face the interviewer correct properly? Ma'am, in many corporate or many companies, like for example, when I used to work in Google, so and many there were people who were facing this visually impairment thing. So Hmm. like there are always a staff member that is there with them, and they Hmm. uh, you know help them to to find the interview around like the interview room and everything. So Hmm. they make them sit comfortably, and what I can say that when you enter the room, all right, you should feel that confidence. You shouldn't feel, your body language should uh, highlight that you are not nervous. Okay, Hmm. because there would be a staff member for you to help you, Hmm. they will themselves make you feel comfortable. It's not like that Hmm. will not provide you with the help, because every organization nowadays provide you with a member, so that you Hmm. can have that easy uh, you can Hmm. easily walk, and you can Or easily. we can say to guide us, to And guide when the you're person. sitting, for example, when you are sitting, Hmm. of course, you will be able to hear the interview. Hmm. So from wherever the voice is coming from, you need to just sit straight, and then Yeah. you need to focus on the voice or the sound of an interviewer from where it is coming, and Hmm. you should just s- uh, keep Yes. this in a straightly, like in front Yes. of the interview. Okay. Because when I used to work in the corporate, there were people who used to come and were Hmm. facing the visual impairment, and Hmm. every person was provided staff support, and every like even the employees will help you in finding the Hmm. room, right? Hmm. If, That is there. yeah, yeah. So that's not a problem. So for grooming And part, one thing I want to say, like, I don't know, dress up part you have covered, right? Ma'am, dress up part, I guess in the mock interview, they have covered how you can dress, but I Hmm. can also cover that. In the dress up part, Hmm. you can have a coat and a shirt and a trouser. You should be Hmm. formally dressed, first of all. Like either it's a girl or it's a guy. Hmm. One should formally be dressed and then come to the interview. You can have a tie if you want to. If even if you do not have a tie, it's absolutely fine, because in India, when it is summers, like it is a lot of heat, so you can have a proper formal shirt and a proper fitted trouser, and Hmm. the trouser should not be too much fitted because it will not look good then. It should be Hmm. a little relaxed, and the shirt should be proper ironed along with the trouser. And if you want to wear a coat, then you can also wear a coat as well with a tie. But a formal Okay. shirt and a pant would be more than enough. You can have a light sky blue shirt with navy blue pants, or you can have a white shirt with the black pants, or with the navy blue pants. So anything is. Okay. This works if a person is comfortable in wearing that shirt and trousers, but from a girl's perspective, like Shruti, I think can answer. What could be the other alternative to wear in the interview? Ma'am, from my Uh, experience, I have seen the girls also wearing the formal shirt and no, a trouser some only. girls are there, na? Like they're not comfortable in wearing Okay, shirts okay. and Maybe, trousers. maybe maybe I'm not very. I don't know Yeah, about that that's part. why. Yeah. Yeah, if Shruti is there, she can answer the question or not. And if a man with a beard, If you are a man with a beard, then it should be properly trimmed. Properly Try to trimmed mean a be clean shave. try to Okay. be trimmed or clean shave because Yeah, interviews clean shave usually या properly trimmed. Like बिल्कुल
लाइक अगर आपकी बीएड काफी बड़ी होगी या पैची होगी, दैट डज नॉट गिव अ यू नो वेरी गुड impression. So you need to realize one thing, Miraj, ki first impression is the last impression. First impression is your last impression, and your first impression would be ki how are you walking into the room, how are you dressed up, how well groomed are you. तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो आप कैसे, कितने कॉन्फिडेंस से वॉक कर रहे हो, आपने क्या पहना हुआ है, ठीक है, आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हो या नहीं हो, ठीक है, और आप प्रॉपरली ग्रूम्ड, आपके नेल्स कट होने चाहिए, आपकी बियर्ड बिल्कुल ट्रिम्ड होनी चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए, राइट, एंड आपके शूज पॉलिश होने चाहिए, राइट, एंड इफ यू हैव एनी टैटूज और एनीथिंग, वो हिडन होनी चाहिए। तो वो सब चीजें मैटर करती है, ये फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। But and as a low vision person, I मेरा वाक भी पूरी तरह No, एकदम that is fine. See, नहीं see, होगा। see. Yeah, Raj, I एंड can clearly understand. जिस वो वहीं, that is fine. हाँ हाँ, That is ना fine. ना, अगर आपका walk, जब बैठूंगा, हम्म, जब हम्म, बैठूंगा वो, उसको तो देख तो पाऊंगा, पर उसका आई हम्म, हम्म। टू आई कांटेक्ट जब करूंगा तब हम्म, प्रॉब्लम होगा। अगर अगर yes, नहीं yes, नहीं, yes, I करने का get आई it. टू कोशिश भी आई करूँ आई टू आई तो कांटेक्ट करने बहुत। का जरूरत नहीं होता है, बस उनकी हम्म, तरफ कॉन्फिडेंटली आपको हाँ, देखना अपना रहेगा। बोलो, हाँ आपको जी, बस हाँ जी। अटेंटिव अटेंटिव दिखाना है अपने आप को, आप और कितना अटेंटिव सेकेंड हैं चीज, उस जब वहां बैठे। आई हैव विथ फ्रेंच कट बियर्ड, बट आई मैं काटना भी नहीं चाहता हूँ तो। ठीक है, नहीं, हिज फ्रेंच कट बियर्ड इज फाइन, मतलब एज लॉन्ग एज वो आपकी ट्रिम्ड है, राइट, अगर वो ट्रिम्ड है ये आपकी बियर्ड, बिखरा हुआ नहीं है, लाइक हाँ, तो ठीक है, जैसे दैट इज पार्टी में ओके। गया या कोई काम, लाइक मतलब ठीक से ट्रिम्ड या नहीं है। इट इज ओके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर फ्रेंच कट बियर्ड में, बट वो ट्रिम्ड होनी, वेल ट्रिम्ड होनी चाहिए, ठीक है, आप पे सूट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही सूट नहीं कर रही है। या तो वेल ट्रिम्ड होनी चाहिए, या तो मैं बोलूंगा आप उसको शेव भी कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। आई वुड रिकमेंड कि आप शेव कर लीजिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप शेव नहीं करना चाहते तो उसको ट्रिम्ड रखिए और बेसिक नॉर्मल रखिए, ठीक है। ठीक है। ये और सब इंटरव्यू के बाद आप फ्रेंच कट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, वो आपकी ये चॉइस सब है। चीजें बेसिकली आपके एफर्ट्स को शो करते हैं कि आप कितना हम्म, इस इंटरव्यू को सीरियस हो लेके आप इंटरव्यू के कितना लिए। सीरियस हो। हाँ, अगर आप ठीक मतलब है। कैसे भी चले जाएं वो भी उनको उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पर वही है। प्लस आपका वॉकिंग, अब जैसे कि आपने बोला कि आपका विजुअली थोड़ा चैलेंज रहता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आपको उस चीज को वीकनेस नहीं दिखानी। इवन अगर आप किसी के सपोर्ट से अगर आप जा रहे हो किसी रूम पे, राइट, तो यू नीड टू बी, यू नीड टू शो देम कि यस इट्स ओके, I आई want to ओन दिस add थिंग। on this point regarding the mobility part. If you are a visually challenged, always carry with you your white cane. Never show your dependency on any one person who will assist you to the room or to any other place. Always there will be one person to guide you, but show your mobility skills as well. Keep white cane with you. यस, Okay? Yeah. वो तो पर एंड सब इन शायद द आपको सब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एज होंगे, बट जैसे मैम ने बोला कि यू शुड हैव दैट स्टिक विद यू, कि एटलीस्ट दे विल नो कि यस दिस मैन डज नॉट नीड, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, ही कैन वर्क हाँ, ऑन हिज ओन एज। स्टार्टिंग के लिए है कि जगह नहीं पता, आप नेविगेट नहीं कर पा रहे हो, असिस्टेंस चाहिए, बट एक बार अगर जॉब लग गई तब आप इंडिपेंडेंटली, अगर जी याद है आपको जगह, तो आप मूव कर सकते हो, तब नीड नहीं है किसी की। तो वो शो करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। पर अभी जैसे मेरा कंडीशन है, मेरा व्हाइट केन भी यूज करना नहीं पड़ता, मतलब हाँ ब्राइट लाइट में प्रॉब्लम होता है। पर हाँ अगर मैं खुद अगर अंडरग्राउंड मेट्रो में जाऊं या घर के अंदर आऊं, तो कोई एक हाँ। अननोन पर्सन देखकर समझ भी नहीं पाएगा कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ या नहीं हूँ, मेरा नहीं, अगर मोबिलिटी आप देखकर। कॉन्फिडेंटली इंडिपेंडेंटली आप कॉन्फिडेंट वॉक है कर विथ सकते लो हो, विजन। तो नो इश्यू। मैं लाइक उनके लिए भी बोल रही हूँ जो नहीं है ना, पता नहीं लगता है, या फिर थोड़ा विजन कम है, उनके लिए भी बोल रही हूँ मैं। हाँ, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे अपनी ड्रेस अप तो बोल दिया, जैसे फॉर्मल ड्रेस अप, अच्छा इस ये क्या इफेक्ट करेगा, आप कौन सा टाइप का वॉच पहने हो, कौन सा टाइप का शू पहने हो, ऐसा भी कोई इफेक्ट करता है? सूट मतलब अगर आप कलर, मतलब देखो, अब जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट, जैसे कि आपने वाइट ब्लैक पहन लिया या वाइट या नेवी ब्लू पहन लिया तो वो अच्छा लगता है। अगर आप
ये पहन लोगे आप येलो शर्ट और नीचे ग्रीन पैंट्स, तो वो थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट? That doesn't look formal at all. Huh? ठीक है, तो आपको फॉर्मल आप सी आपके पास गाइडेंस के लिए हम हमेशा है। सो आप सबसे अच्छा और बेसिक रहता है, वो कहीं पे भी मिस आउट नहीं होता। वाइट शर्ट, डॉटेड वाइट शर्ट भी हो सकती है, पैटर्न वाली भी, जिसमें आपके वो दैट विच लुक्स क्लीन एंड नीट। ये भी नहीं कि ज़्यादा बहुत सारे प्रिंटेड बड़े बड़े ज़्यादा पैटर्न। वाली नहीं होनी चाहिए, Not प्लेन ज़्यादा dotted, not बेटर है। dotted. Ishant, प्लेन ज़्यादा बेटर है। plain is much better, or you can wear check shirt and the like black trouser, or श्रुति maybe एक बार मैम फीमेल्स एम्प्लॉयज के लिए भी कह रही थी कि इफ somebody इज नॉट कंफर्टेबल इन द फॉर्मल ड्रेसिंग, सो व्हाट दे कैन वियर इन। शर्ट और ट्राउजर में नहीं तो गर्ल्स क्या वेयर कर सकते हैं? hello. So if not shirt and trouser, या see, there are some formal tops are also there. हाँ। Okay, like हम्म, formal tops, and you can just wrap it up with a blazer. हम्म। Okay, नहीं तो blazer सिंपल कुर्ती एंड विद पैंट्स और समथिंग लाइक and दैट विल नॉट वर्क। kurti can go in the formal. Okay, हाँ, या like, but most of the time, they like people don't prefer to wear kurti for the हम्म, interviews and all. Okay, so they are हम्म, going with the like आपको बॉटम में इट वुड बी प्रेफरेबली आपको यही रहता है कि आप ट्राउजर ही वेयर करो, ट्राउजर ही कैरी करो। या कंफर्टेबल ट्राउजर्स आप परचेज कर लो, आपको कंफर्टेबल ट्राउजर्स हम्म, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट आपको टक इन हम्म, वाले ही होते हैं। देयर आर अदर लाइक जेगिंग्स या एंड मेनी ऑप्शंस आर देयर। ओके, हम्म, इट्स नॉट लाइक दैट आपको पैंट्स ही लेनी पड़ेगी। हम्म, Okay, maybe bell bottom you can wear, but it shouldn't be like shouldn't look like a plazos. नो Okay, गॉट फिट इट। फिट में हाँ। ही आपको लेना पड़ेगा अगर आप पैंट्स भी ले रहे हैं, थोड़ा हो जाएगा। इट शुडंट हैव एनी कट्स और समथिंग। ओके, हम्म, तो हम्म, ये सब चीजें आपको उसमें लेना है आपको। हम्म, बट अगर आपको कुर्ती पे आपका जा रहा है, बट कुर्ती प्रेफरेबली भी नहीं होना चाहिए। हम्म, बट अगर आप वेयर कर रहे हो, आपको थोड़ा-सा लाइक ऑर्गन जिस भी आप कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हो या कुछ ऐसा है, तो आपको थोड़ा-सा उसका भी देखना है कि वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है। कल्चर बिकॉज़ हर कैसा? ओके। कल्चर में वो कुर्ती अगर फॉर्मल में जाती भी है, बट अगर वो हम्म, नहीं जा रही है कुर्ती में, अगर ज़्यादा सीक्वेंस वर्क है या ऐसा कुछ है, वो फॉर्मल्स में नहीं जाएगी। ओके, तो इस गॉट। सेफर ऑप्शन ये रहता है कि कुर्ती आप वेयर ही नहीं करो, बिकॉज़ इंटरव्यूअर का नहीं पता होता कब कौन-सा वो लोग का ये जा रहा है कि हम्म, यार ये वाली कुर्ती आपकी फॉर्मल में नहीं है, ये तो फॉर्मल ड्रेसअप ही नहीं हो हम्म, पाएँगे। ओके, हम्म, बिकॉज़ जाओगे और आपका मतलब देखो आपके ड्रेसिंग सेंस से ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा, राइट, राइट। राइट? तो वो यही होगा आपका कि आप बेसिक एकदम कैरी करके चले जाओ, बट अपने कंफर्टेबल के हमेशा कम्फी क्लोथ्स ही होने चाहिए। बिकॉज़ अगर आप हम्म, कंफर्टेबल कपड़ों से आप कंफर्टेबल नहीं होगे, तो आप वहाँ पे ढंग इंटरव्यू आपको नहीं पता कि वो 10 मिनट का इंटरव्यू है या 1 घंटे का इंटरव्यू है। आप उसके हम्म, फिर इतना अनकंफर्टेबल हो जाओगे, आप आंसर्स में भी मतलब ऐसे फंबल कर जाओगे बिकॉज़ आप ऑलरेडी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। हम्म, ओके, तो इसलिए आपको प्रेफर यही रहेगा। बट अगर आपको शर्ट्स नहीं वेयर करनी है, देयर आर सम टॉप्स। ओके, हम्म, अंदर का आप चेंज कर सकते हो, आप उसको अपने एक ब्लेज़र के साथ आप उसको रैप कर सकते हो कि ठीक है। तो हम्म, आपका लाइक फुल हाई नेक, इफ फॉर विंटर्स आपकी हाई नेक्स आती हैं एंड आप उसको उसके ऊपर आप ब्लेजर डाल लो, उसको टक इन नहीं करना होता हाई नेक्स को कभी भी ऐसे करके। आप उसको टक इन नहीं करोगे, आप उसको लाइक नॉर्मल बाहर छोड़ोगे और आप उसको पहनकर जा सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू वेयर शर्ट्स, देयर आर ऑप्शंस फॉर अपर, बट नीचे ओके। आप लाइक फॉर बॉटम। हाँ, हाँ, वो तो सेम ही हाँ, रहेगा। या ओके, ओके, गॉट। हाँ, yeah, and for the footwears, it should be like formal bellies. Okay, it shouldn't be ये shoes like that. Formal shoes can be there. हाँ, Okay, but आप प्रेफरेबली ये रहेगा कि आप बेलीज या फिर आप बेलीज ही कैरी करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। स्लीपर्स एंड ऑल राइट। ये तो बेसिक है, ये आपको ये सब नहीं होना चाहिए। हम्म, ओके, या हील्स कैन बी देयर। हम्म, हील्स आप ले सकते हैं अगर आपको हील्स लेना है। बट अगेन हम्म, हील्स में भी आपको अकॉर्डिंगली देखना है कि आप उसमें प्रॉपरली वॉक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। वर्क कर रहे हो कि नहीं? हाँ, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें। एनी तो अदर मेरा क्वेश्चन? आपको वैसे अब कोई मतलब आपको अब कोई क्वेश्चन है मेरा आज? या यस, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है फहीम दिस साइड अगेन। या हाँ, फहीम प्लीज। तो एक्चुअली एज वी वर टॉकिंग अबाउट द बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, सो हम्म
जैसे अभी हम जैसे वहां बैठे हैं तो इंटरव्यू हाँ के जी। सामने, तो हम क्या मतलब रिलैक्स मीन्स, क्योंकि हम जैसे बात हुई थी कि हमें अपने बॉडी और ब्रेन मतलब माइंड को एक दूसरे से वो नहीं करवाना, तो हम क्या मतलब मूवमेंट कर सकते हैं अपने हैंड्स वगैरह में थोड़ी थोड़ी मतलब, या हमें बिल्कुल या एक। हैंड जेस्टर्स होने चाहिए। आप जब भी अगर मतलब बातें आप कर रहे ये हैं, भी हैंड होना चाहिए जेस्टर्स। कि हाँ यार, श्रुति प्लीज कंटिन्यू। हाँ, आप हैंड जेस्चर्स डालो, वो हमेशा एक प्लस पॉइंट ही होता है, रादर देन सिटिंग आइडल कि आप अपना बस एकदम स्टिफ होकर बैठे हुए हो। आपको हैंड जेस्चर्स प्रेफरेबली हमेशा डालने ही चाहिए। ओके, प्लस आपको कभी भी एकदम हैंड फोल्ड करके नहीं बैठना है। आपको अगर नहीं देना है हैंड जेस्चर्स या कुछ है, आप नॉर्मल बस हाथों को दोनों नॉर्मल साइड्स में आप बस रख दो, बट आपको हैंड फोल्ड करके आपको नहीं बैठे रहना है, बिकॉज ये बहुत नेगेटिव भी लगता है। और हैंड फोल्ड इज लाइक यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ कि यार कुछ अलग क्वेश्चन ना फेंक के मारे मेरे को इंटरव्यू, कुछ अलग क्वेश्चन ना दे मेरे को इंटरव्यू। आई डोंट वो आई ऐसा डोंट लगता है कि आपका आप थोड़े नर्वस हो अगर आप हैंड फोल्ड करके हाँ बैठे हो, वो दैट शोज कि आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो। सो हाँ प्रेफरेबली यही रहता है कि आपके जो दोनों हैंड्स है वो आपके नीज के या थाइस के ऊपर दोनों हो, या तो आप थोड़े हैंड जेस्चर भी कर सकते हो। ठीक है, उससे पता चलता है कि यस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड हाँ यू आर बट एबल। क्योंकि एज अ टोटली ब्लाइंड हैंड जेस्चर्स वो मतलब हो सकता है उतना वो ना हो पाए, है ना, जैसे मैं भी वो टोटली। जरूरी प्रैक्टिस नहीं कर आप सकते हैं ना, करो। वही वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मतलब हल्का हाँ। मतलब ना, तो यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस उसमें, इतना इट्स नॉट वेरी टफ। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप वहाँ पे मतलब ट्रैवलिंग के टाइम भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो दैट विल बी ओके। प्लस ऑब्वियसली जैसे कि मोस्टली हायरिंग्स आपकी अप्रैल मार्च मई में इन सब में होती है, तो ऑब्वियसली समर्स आर देयर सो यू कैन वियर कॉटन क्लोथ्स प्रेफरेबली, राइट? And secondly, please carry perfumes as well with you because of course आप summers में travel करते हो, you will be sweating and everything, so you don't have to come to an interview smelling, right? Have a bad or a body odor. So you can always carry a perfume with yourself whenever you're going to an interview. ठीक है, wear a cotton clothes if there are summers. In winters, of course, you can wear blazers, shirt, right? And if you're wearing a sweater, make sure that you are wearing a shirt below that, and the collars are ब्लेजर्स seen. एज वेल। Yeah, इट्स नॉट लाइक ओनली विंटर में ही, समर ब्लेजर्स भी हैं, आप वो भी कैरी कर सकते हैं कि फुल फॉर्मल आपको हाँ लुक लेना एग्जैक्टली। है, समर ब्लेजर्स भी आप कैरी कर सकते हैं। हाँ, the आई एक्सक्यूज मी थिंक पैनल। उन्होंने as well in the summer. रिलैक्स रहने वाला बोला था ना। इट डजंट मीन कि आप ऐसे चेयर पे पीठ टिका के ना ऐसे बैठ गए, Yes, वैसे नहीं, yes, yes. प्रॉपर स्ट्रेट बैठना है। और जेस्चर नहीं भी कर पा रहे हो, हाँ वो जैसे तो है। सर ने बताया कि आप नीज पे हैंड मतलब ऐसे रख सकते हो, कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ऐसा भी नहीं एक्सक्यूज मी थोड़ा बहुत करना पैनल। कि प्रैक्टिस। फ्रेम बिल्कुल ही हाँ। रिलैक्स हो कैसे नीचे गिर जाना है हाँ, बट यू नीड अरे टू नहीं वो नहीं, यू वो नीड टू आई गॉट दैट कि मतलब रिलैक्स हाँ, जस्ट मतलब टू मैं। मेंशन। या हाँ, वो जस्ट टू मेंटली मेंशन। रिलैक्स होने चाहिए, आप मेंटली रिलैक्स होने हाँ। चाहिए कि हाँ मतलब यू आर नॉट गेटिंग नर्वस। अगर सी या नर्वसनेस इज वेरी नेचुरल, वो चीज नॉर्मली भी वो होती है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत तो सबको रहती है। चाहे वो सबको ही होती है। हाँ सबको होती है, सही चाहे वो बात। सीईओ क्यों ना हो, उसका भी इंटरव्यू होगा उनको भी रहेगी हल्की फुल्की, दैट्स एब्सोल्युटली नेचुरल एंड फाइन। व्हाट यू नॉट नीड टू डू कि वो नर्वसनेस को टेक ओवर नहीं करने देना अपने कॉन्फिडेंस पे। एक्सक्यूज मी पैनल। सर, यस। लगे हाथ बारीकियों में दिलचस्पी रखता हूँ, तो आप अगर ये बता सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पलरी जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स क्या हो सकता है? कुछ सिचुएशनल भी बता दीजिए और कुछ जनरल भी, आप अगर डिस्क्राइब कर Exemplary सकते hand gestures. हैं, इफ दैट्स दैट वाज पॉसिबल। No, I can send you the link of डिफिकल्ट। any video. I मतलब ऐसे नहीं तो सर, मैं वही मतलब ऐसा होता है ना कि डिस्क्राइबेबल yeah ऐसे yeah कहते I हैं get ना it, लोग, I get तो it what you are saying, या but इसके लिए जानना था। मैं ऐसे explain नहीं कर पाऊंगा कॉल पे। What I can do, I can send you a link of a video, YouTube You video can where take a yeah, sighted person help if there is one. They can just tell you how to do that. yeah, That तो way वो we videos can help हाँ you. YouTube पे पूरी videos available है। I can send you the link personally अगर आपको इसमें कोई problem आती है, so you can see that and you can learn that हेलो, for yourself. It will Yes, just let me maybe please few do explain that. that. seconds. Let me explain that. Like Ishant, you can send the video as well, and for the explanation, like a little bit explanation I can give. जी Okay, प्लीज सर। Hmm. so yeah, it's like hand gestures, आप open palms रख सकते हैं। Okay, ये आपको थोड़ा सा feel कराता है like आप trusted and openness है। ये open palms, basically hands are relaxed and palms are slightly open facing upwards, like desk पे हम जब हाथ रख रख रहे हैं अपना, तो हमारे palms are facing upwards. Okay,
वाइल एक्सप्लेनिंग एनी पॉइंट्स, जैसे आप बात भी करते होगे तो आपके हैंड जेस्टर्स जो नॉर्मली जाते हैं, ऐसा नहीं कि जी यू आर जी। डूइंग इट लाइक कि करना है इसलिए बोला गया था तो करना है, वो भी नहीं जाएगा, वो ऑब्वियसली दिख जाएगा कि बंदा फेक कर रहा है। जी ओके, जी। तो आपके हाथ आप नॉर्मल, आपको ऐसा कुछ नहीं आ रहा, आप नॉर्मल हैंड्स आपने रख रखे हैं, दे आर फेसिंग अपवर्ड्स। ओके, सो रेस्टेड हैंड हो सकते हैं आपका, लाइक नॉर्मली जैसे ईशांत ने आपको बोला था कि आप अपने थाई पे, आप अपने लाइक नी पे आप नॉर्मल हैंड्स रख दो, अपनी नॉर्मल आराम से बस फिंगर रिलैक्स, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल आपने लाइक मुट्ठी बांध रखी है एकदम, कि आपने बिल्कुल एकदम हैंड क्लोज कर रखा है एकदम, नहीं ऐसे भी नहीं, आप नॉर्मल रिलैक्स हैंड को आप छोड़ दो कि हाँ ठीक है, जी आप मैम। आराम से आप सीरियस भी हो, यू आर लिसनिंग समवन, ऐसा भी आपका ये सारी चीजें रहेगा। आपको जेंटल हैंड मूवमेंट्स आप दे सकते हो कि अपना कोई वर्ड बोल रहे हो तो बहुत बहुत बेसिक ये वाले सारे हैंड जेस्चर्स होते हैं आपका, या फिर आप कुछ नॉड नॉड कर रहे हो तो लाइक फॉर दिस आई दैट आई डिड दैट, तो आपको थोड़ा बहुत ये वाले हैंड जेस्चर्स आप कर सकते हो, नॉर्मल टेबल पे हैंड रख दिया आपने, ये ऐसे आप ये चीजें आप कर सकते हो। बाकी आप वीडियो से देखोगे वो आपको और अच्छे से समझ आएगा। समझ रहा हूँ बट मैम, थैंक यू सो मच। कभी नहीं होने चाहिए, जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको फोल्डेड हैंड्स नहीं रखने हैं, और हैंड्स इतना भी मूवमेंट नहीं देनी है कि मतलब इंटरव्यूअर डिस्ट्रैक्ट ही हो जाए बिल्कुल, कि अरे कि हाथ ही मूव हो रहे हैं, ऐसा कि मतलब क्या, ऐसा बहुत ज्यादा ही हर बात पे भी नहीं हो रहा होता है ना, कि मतलब इतना क्या हैंड मूवमेंट, वो एकदम ना, मतलब आप खुद भी, आपको भी लगता होगा कि अरे यार बस ऐसा वाला, तो लाइक इतना ज्यादा हैंड मूवमेंट भी आपको नहीं देना है। या आपके साथ वहां पर लाइक आप इंटरव्यू देने गए हो, या वहां पर आपको कोई आंसर वगैरह आप कुछ दे रहे हो, सामने टेबल पे अगर कुछ भी रखा हुआ है तो आप उससे खेल के आंसर्स दे रहे हो, नहीं, आपको वो सब पेन वगैरह, क्लोथ्स, अगर कुछ भी, फोन रखा हुआ है, आपको फोन भी एकदम, आपको हमेशा फोन रखना है, आपकी स्क्रीन इज फेसिंग टुवर्ड्स द टेबल। जी, यानी उल्टा फ्लिप डाउन। Mm-hmm. एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू। I या think we are done with the questions, so we can cover up this. ओके मैम। Mm. Next team has joined. Yes, ma'am. Okay. Who is sharing the screen? Ma'am, Shreya will sharing the screen. Oh, Is the screen showing? yeah, it's visible. एक्सक्यूज मी मैम, जब सेटअप हो रहा है, मेरा ना एक सवाल रिज्यूमे के रिगार्डिंग Hmm. रह गया था, उस समय पूछ लेना चाहिए, बट आई टोटली वेंट आउट ऑफ माय हेड, अभी दिमाग में आया, सो पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, पूछ लीजिए। मतलब उसी समय पूछना चाहिए, बट ये रिज्यूमे में एक पर्सनल स्टेटमेंट का सेक्शन होता है ना, हम्म। तो वो पहली बात तो कंपलसरी है, और अगर है तो हमें उसमें मतलब, हाँ उसको लिखने का, क्योंकि आई वाज स्लाइटली फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज, उस वजह से थोड़ा I वो। don't think that is compulsory because main thing what they want your contact details, your address that you will be mentioning at the top. बट नहीं No नहीं मैम, need to mention your पर्सनल स्टेटमेंट से मेरा मतलब था, मतलब अपने बारे हाँ, कुछ वो एक सेक्शन रहता है ना। हाँ, आई नो। हाँ तो वो नहीं उसमें रखो तो एग्जैक्टली ज्यादा बेटर है। अच्छा, सो नहीं होना हाँ बेहतर है, राइट? हाँ, क्योंकि ओवरऑल 1 और 2 पेज का रिज्यूमे रहता है ना हमारा, उससे और एक्सटेंड हो जाएगा और उसका इतना नीड नहीं है। आप अपना नेम, कांटेक्ट और लिंक्डइन प्रोफाइल तो ऑलरेडी मेंशन कर रहे हो। मैरिटल स्टेटस आई डोंट थिंक दैट इज मतलब जरूरी है। उससे बढ़ेगा ही स्पेस, बाकी चीजें भी कवर अप करनी रहती है ना उसमें, स्किल्स एंड ऑल, उसमें चला जाता है वो 1 और 2 पेजेस को, उससे फिर रेलेवेंट नहीं रहता इतना मेरे अकॉर्डिंग।
Hmm. जी मैम, थैंक यू। Yeah, So, ma'am, can we start? yeah, you can. So, hello everyone. Good afternoon to all of you. First of all, thank you for being here today. So, before we start, let me quickly introduce our team members who are with me today. So, my name is Kapish and I will be introducing today's session. Now, with me, I have Raghav who will help you understand the job portals. Now, next is Shreya who will guide you on how to create a strong profile on LinkedIn. And we also have Khushbu who will talk about safety and how to avoid fake job offers. And lastly, the Swam Sanchit who will explain how recruiters search for candidates. So let's move to the today topics. So today we are going to learn something which is very important for your future, which is job portal and professional profile setup. Now we will also share a video with you so that you can understand everything more clearly during this session. So in today world, companies do not hire people only through offices or newspaper anymore. Most companies now search for candidates online. And in this increasingly digital world, company are actively seeking talent online, making your digital presence more critical than ever. So your professional profile is act like your digital resume, a powerful tools that helps you in finding the jobs. So in today's time, recruiter use some job portals like LinkedIn, Naukri.com, Indeed, and Work India, and Apna App, etc. These websites help you to find jobs, like access a vast network of job openings that match your skills and aspirations. Secondly, apply from home. Submit these application efficiently from the comfort of your home, saving time and effort. And now, third, you can get interview call. A strong profile increases your visibility, leading to more interview calls and career opportunity. And the last is build your career. Connect with these industry professionals and continuously develop your skills for long term. So for a person with disabilities or for a PWD's people, these platforms are especially very helpful because the people can work from home and they can choose job to their suit for their skills and comfort, and they don't need to travel every day. And many companies today support inclusive hiring also. If your profile is strong, professional, then companies and recruiter will notice you. So in today's session we will learn how to create a professional profile on LinkedIn and various websites, and which job portals are genuine and trustworthy, how recruiters find candidates online very well, and how to stay safe from fake job offers. And by the end of this session you will feel more confident to apply for job online and take the next step in your career. Next, the Raghav will carry on. Good afternoon, everyone. Today, I would like to explain about the LinkedIn profile. Like LinkedIn is the biggest professional networking platform, and LinkedIn works like an online resume, and it it uses for the office and corporate jobs. We can easily find internships and remote works. Firstly, we will talk about the profile photo. When someone opens a LinkedIn profile, the first thing they notice is like the profile photo. Uh, Good profile it should be clear and professional, taken with a simple background. It should be like plain background. We should avoid the selfies and group photos. Uh, we should like see that only the sorry and profile
Sorry, a professional photo means creates a good first impression and will increasing profile visibility. And if we talk about the next headline, the headline is one of the most important parts of the LinkedIn profile. Instead of writing like just student or the fresher, we can clearly mention the type of the job or we are looking for, of the main skills, like for example digital marketing training with the social media skills, or the MBA graduate with excel and MIS skills. This means by this the recruiters can quickly understand it, what the role suits us. And if we move further in the about section, in this we can explain that what we are, what skills we have, what kind of job we want. And this section should be simple and short, usually around 4 to 5 lines. It should focus on the learning attitude and our career goals. Should avoid the long paragraphs. The language should be positive and professional. The next step is about the relevant skills, the skill section, in which the recruiters should know that what exactly the skills we have. That should be clear that we have the skills uh, related to the job role we want. And we should add only those skills that we know, that like MS Word, MS Excel, customers, like it related to the job role that we want. And visually impaired candidates can also mention their comfort with the assistive technologies and digital tools. Skills should always match the type of jobs. And the last one is targeted job search. Job portals like Naukri and Indeed are and Apna app are also helpful. We should complete our profile fully using a simple and a text-based resume. And further, the Raghav will explain about the various job portals. Thank you. स्लाइड चेंज कर दूं I'm sorry, थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है, लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, ये शेयर बढ़ नहीं रही है आगे स्क्रीन। अब स्टॉप करके दोबारा करके देखो। नहीं, वो तो हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ So शुरू। let's talk about so here are the major real job portals in India. First is Naukri.com. It is best for corporates like corporate office and sales jobs, HR and IT, and customer support roles. Basically, it is for corporates and offices. And here for at Naukri.com, first step is like creating our account and uploading the resume, and then filling the basic education and skills. And after that, we can also search for the disability friendly jobs at Naukri.com. And second is Indeed.com. It is best for work from home jobs and for part time jobs, which we can do from distance and entry level positions. And at Indeed.com, we can also filter jobs and customize jobs by search by we can like we can search by jobs available at our location near location. And we can also hear the job types and precise results. And at Apna app, it is best for local blue collar jobs. And here
अपना ऐप is focused on connecting with opportunities in immediate. So these are the major job portals we can search. So next, team member. Hello, am I audible? Yes, you are. Okay, so just a second. Okay, so next we will talk about how to make an effective resume. Okay, so first we talk about the resume. Resume is basically a short document that tells employer who are you and what you can do. Basically, it helps you to apply for a job and get noticed. So a good resume should be simple, clean, and easy to read. So there are like six important resume information we really need that. First one is your full name. Okay, so this should be at the top and it should be easy to read or see. Second one is your phone number, so employer can call you. Third one is your email address, so that they can contact you if your contact number is not available. They'll write you an email. Fourth one is your education. Education which shows like in which school you went or what you have studied. Are you still studying or working or not? Then came to it your fifth skills, which is what you are good at. Your relevant skill like typing, communication, and using a computer or any kind of relative skills you have. And sixth one is your experience. If you have any, such as job, volunteering, and school project, any kind of science fair you were interested in, so you can mention your work experience if you have any in your resume. Then we came to design and principle. So your resume should be simple and it should be easier to read and understand. You should use a big font so everyone can see the words clearly. And you should also use simple language which is easy for other people to understand as well. And you should not use like heavy design, bright color, too many pictures, because resume should be your kind of your virtual self. It only talks about your name, number, professional skills, email history. That's it. There should not be any pictures, no bright color, anything at all. And then we came to accessibility and focus. So like some people do understand that people with disability, visual impairments cannot see the resume, so it should be screen reader friendly. So like basically just like if you have any kind of skills, education, experience, there should be a clear heading about all of this, like education, skills. So this helps screen reader the information is in correct order. And you should also save your resume as a PDF or a Word document, because these formats work well with screen readers. And using a simple layouts like straight text, clear headings makes your resume easier for everyone to understand that. And we will talk about, Shreya, can you change the slide, please? Huh. Next, we talk about staying safe online and spotting the fake jobs. Like people who are genuinely hiring you, they will not ask you about any OTP, any kind of your family information. They will only contact you through your resume only. So when you make a resume, you must be careful about what personal information you share. You should include your name, phone number, email, but you should never include things like your home address, password, social media password, or any kind of private things that so it will help you to protect you from fake jobs. And you should also be careful about where you send your resume. Only send it to trusted companies like just Raghav told us, Naukri, Apna app, Indeed. You should only share your resume there itself. And like a good resume should be simple, clean, and easy to read and accessible for safe. Like no fees, real companies never ask for money or registration process. And official communication only happens through the emails and phone calls only. And proper details like authentic job description are clear, detailed, and that should be specific enough.
And personal information, never share your OTP, bank account details with any kind of employees. So this will help you to spot the fake jobs as well. Now further will be continued by Swaya. Good afternoon, everyone. I am talking about your talent, your potential, embarrassing career growth. Generally, it is um, helpful for a career growth. Your disability does not define your talent. You have skills, ability, potential. Many companies now support remote jobs, flexible hours, inclusive hiring. Keep learning. Basic computer, English speaking, online tools. Update your profile every month. Apply regularly. Remember, your profile is your digital identity. Make it strong, professional, and confident. Um, Shreya, next slide. Now I'm talking about the real job portals. Use only trusted platforms like LinkedIn, Naukri.com, Indeed.com, Apna app, and there is a one government site also, ncs.government.in. There is a yes. Empower your career growth. By the end of this session, I will tell one thing. Today, you learn how to build your digital career identity. Keep practicing, keep applying, and never give up. This is all. Yes, we are done with the PPT. Now we will show a YouTube video like related to the LinkedIn profile. अपनी फील्ड के लोगों के साथ अगर हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हम लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाते हैं। लिंक्डइन को यूज करने के दो सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, ये हमारे ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह होता है, यानी अगर हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल हमने अच्छे से सेटअप की है तो ये हमें और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लेने में हेल्प करता है। एंड दूसरा ये कि ये हमारी लिए पर्सनल ब्रांडिंग को सेट करता है। पर्सनल ब्रांडिंग कहने का मतलब है कि जब हम किसी रूम से बाहर निकलते हैं, उस रूम में बैठे लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। बेसिकली हमारे जो फील्ड के लोग हैं, जो हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर आते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर हमने अच्छे से लिंक्डइन की प्रोफाइल अपने लिए सेटअप की है तो हमारी एक पॉजिटिव इमेज अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री के अंदर जाती है। तो इसीलिए लिंक्डइन की प्रोफाइल को अच्छे से इंप्रेसिव तरीके से सेटअप करना इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ लिंक्डइन खुद कहता है कि 87% रिक्रूटर्स ऐसे हैं जो आपको हायर करने से पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एक बार जरूर देखेंगे, इसीलिए उसका इंप्रेसिव होना जरूरी है। अब आज का जो हमारा सेशन होगा उस I have got a 5x growth in my salary, and it was a overseas assignment. I am very happy to mention that I got 9 offers as total. Finally landed a job in Singapore as a Scrum Master. Will be working for TCS. From September onward, I worked. इसके अंदर हमने दो प्रोफाइल्स को खोल के रखा है। सबसे पहले तो दिस इज माय ओन लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसमें आपको काफी सारी चीजें दिख रही होंगी। एक्टिविटी सेक्शन फील्ड है, एक्सपीरियंस सेक्शन फील्ड है, एजुकेशन सेक्शन फील्ड है, स्किल सेक्शन फील्ड है। तो ये ऐसी प्रोफाइल है जो ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है। दूसरा, हमने एक और प्रोफाइल क्रिएट की है जो बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएटेड है। तो चाहे आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आज ही फर्स्ट टाइम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ऑलरेडी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना रखी है, बस आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दोनों कैटेगरीज से रिलेटेड ही हम बात कर रहे होंगे। तो आज हम 10 पॉइंट्स को कवर करेंगे। इन 10 पॉइंट्स को जिसने ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखी है
वो एक चेकलिस्ट की तरह इसको सोच सकते हैं कि हाँ फर्स्ट चीजें में सारी चीजें मेरे लिए टिक कर रही है तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो उस चीज को हम इंप्रूव कर लेंगे जाके। अब सबसे पहली चीज जिसका हमें खास ख्याल रखनी है, जो लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर शायद सबसे पहले जाके कोई भी देखता होगा, वो है हमारी प्रोफाइल पिक्चर। अब जब हम प्रोफाइल पिक्चर की बात करते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर हमारी प्रोफेशनल लुकिंग होनी चाहिए सबसे पहले तो। एंड अगर फ्रेश लिंक्डइन अकाउंट है तो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ सैंपल प्रोफाइल पिक्चर्स लिंक्डइन हमें खुद दिखा देता है। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी होनी चाहिए। अब प्रोफाइल पिक्चर में कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो भी प्रोफेशनल फोटो हम प्रोफाइल पिक्चर के अंदर यूज करते हैं वो सोलो फोटो होनी चाहिए, यानी वो ग्रुप में नहीं लगानी है, हमारी अकेले की फोटो होनी चाहिए। रीसेंट फोटो होनी चाहिए, बचपन की फोटो नहीं लगानी है। साथ के साथ फ्रंट फेसिंग अगर हम फोटो रखेंगे जिसमें हमारा पूरा चेहरा विजिबल होगा तो वो अच्छी चीज होगी। एंड कोशिश करनी है एटलीस्ट 60-70% जो एरिया है हमारे सर्कल का वो हमारे फेस के साथ फिलअप हो रहा हो, यानी हमारा फेस क्लियरली विजिबल हो। अब लिंक्डइन खुद कहता है कि अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर प्रोफाइल फोटो लगाई हुई है तो उस अकाउंट को क्लिक करने के चांसेस काफी ज्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रोफाइल फोटो लगाना एक ऑप्शन नहीं है, इसको हमें कंपल्सरीली लगाना है। सेकंड चीज जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं वो होने वाला है हमारा बैनर। अपने बैनर को अपलोड करने के लिए वी कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस कैमरा आइकन एंड यहाँ से हम अपना प्रोफेशनल जो बैकग्राउंड है उसको सेटअप कर सकते हैं। अब हमारा जो बैनर है ये हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो या हमारी फील्ड को दर्शाता है लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल के लिए एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जिस भी चीज में आप इंटरेस्टेड हैं आप उससे रिलेटेड बैनर को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस बैनर के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं तो उससे क्लियर हो रहा है कि जिसकी भी प्रोफाइल है वो शायद एजुकेशन के अंदर है या उससे रिलेटेड उनका कुछ काम है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो आप कोडिंग से रिलेटेड कुछ अपना बैनर लगा सकते हैं, या आप किसी और लेट्स सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड अपने बैनर को क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रोफाइल पिक्चर की तरह बैनर भी हमारे कंपलसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हमें लगाना ही लगाना है। अब तीसरी चीज जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वो होने वाली है हमारी हेडलाइन। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी हेडलाइन के अंदर लिखा हुआ है को फाउंडर अपना कॉलेज एक्स माइक्रोसॉफ्ट एंड इस तरीके से और भी 2-4 चीजें मैंने लिखी हुई है। तो हमें भी अपनी जो हेडलाइन है उसको एक तो इंप्रेसिव बनाना है और उसको कैची बनाना है। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूं तो अगर मुझे कोई भी रिकमेंडेशन आता है पोस्ट का या कि कोई भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आता है तो उसमें जनरली प्रोफाइल पिक्चर से पहले या किसी भी और चीज से पहले मैं हेडलाइन को पढ़ती हूँ, और ऐसे काफी सारे लोग होंगे, इसीलिए हेडलाइन का कैची और इंप्रेसिव होना जरूरी है। अब हेडलाइन में अगर हम एक वर्किंग प्रोफेशनल, फॉर एग्जाम्पल जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब कर रही थी तो मेरी हेडलाइन होती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। इसी तरीके से अगर आप कहीं पे लेट्स सपोज एचआर का काम करें तो आप लिख सकते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव एट एक्सआईजी कंपनी। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए हेडलाइन काफी सॉर्टेड काफी सिंपल हो सकती है। ट्रिकी पार्ट आता है स्टूडेंट्स के केस में। तो स्टूडेंट्स के केस में मैंने 3-4 आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको जो भी इसमें से सबसे अच्छा लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। सबसे पहला केस होगा स्टूडेंट्स में जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो कहीं पे इंटर्नशिप कर चुके हैं या कहीं पे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी हम इंटर्नशिप कर चुके हैं तो वहां पे लिख सकते हैं एक्स इंटर्न एट एबीसी कंपनी, और अगर अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इंटर्न एट एबीसी कंपनी। तो इस तरीके से शुरुआत वाला पार्ट हो जाएगा हमारी हेडलाइन का। एंड उसके बाद जनरली शुरुआत वाला पार्ट ही दिखता है, उसके बाद हम अपने बारे में और चीजें लिख सकते हैं या 2-4 स्किल्स को हम मेंशन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो बाद में अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं। सेकेंड चीज जो हम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट वो है अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना। हम सिंपली लिख सकते हैं स्टूडेंट एट एनएसआईटी, स्टूडेंट एट आईआईटी, स्टूडेंट एट एनआईटी। और ये चीज स्पेशली हम तब कर सकते हैं जब हमारे कॉलेज का नाम ऐसा है जो हमारी फील्ड के अंदर लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो हमें फायदा देगा, वो काफी ईजी होगा लोगों के लिए उस चीज को नोटिस कर पाना। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि हम अपनी फील्ड के बारे में लिखते हैं। हम लिख सकते हैं परस्यूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एट दिस कॉलेज, या हम लिख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर एट दिस कॉलेज। तो इस तरीके से जो हम फील्ड में या जिस भी फील्ड में हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में हम बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं हम उस फील्ड के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये तो स्टार्टिंग वाला पार्ट हो गया जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। साथ के साथ अपनी हेडलाइन के अंदर हम कुछ स्किल्स भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोडिंग के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रोफाइल बना रहे हैं और हमें जावा आती है, तो उस केस में यहाँ स्लैश लगाकर, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो पाइप्स हैं उनको यूज किया है विच इज एक सिंगल डंडा लगा देना, उसके बाद आप जावा सी प्लस प्लस जो भी आपको स्किल्स आती हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं। बट जनरली जो हमारी हेडलाइन होती है उसका शुरुआत वाला पार्ट सबसे ज्यादा विजिबल होता है एंड उसी को मैक्सिमम लोग पढ़ रहे होते हैं। अब एक स्पेशल पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अपनी मास्टर या पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, तो जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं वो लिख सकते हैं परस्यूइंग मास्टर्स एट दिस यूनिवर्सिटी, पीएचडी वाले लिख सकते हैं पीएचडी एट दिस यूनिवर्सिटी। तो वो भी अपने आप में एक अच्छी चीज आती है क्योंकि आपकी जो करंट चीज चल रही है वो सबसे पहले आ जाती है। इसके साथ में एक चीज स्पेशल चीज मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि कई बार हम काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बज़वर्ड लिख देते हैं हेडलाइन के अंदर।
हम क्रिएटिव लिख देते हैं, हम मोटिवेटेड लिख देते हैं, हम गुड कम्युनिकेटर, लीडर, इस तरीके के रैंडम वर्ड्स लिख देते हैं जिनका कुछ सेंस नहीं बनता। तो ऐसे में जो बज़वर्ड्स होते हैं, मतलब भारी से शब्द जिनका एज सच कुछ एडिशन नहीं हो रहा हमारी प्रोफाइल के अंदर, उन वर्ड से थोड़ा सा दूर रहना है, बज़वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। अपने बारे में जो सटीक चीजें हैं उनको हमें अपनी हेडलाइन के अंदर पॉइंट आउट करवाना है। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी प्रोफाइल के अंदर आता है वो होता है हमारा अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन हमारी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आकर हमें दिखाई देता है। इस सेक्शन को अगर हमें एडिट करना है तो सिंपली हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, कोर, रिकमेंडेड, एडिशनल। तो लिंक्डइन कहता है कोर सबसे इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड यानी ये भी आप कर सकते हो, एडिशनल यानी और एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है तो कर सकते हो। अब कोर के अंदर ही हमारी प्रोफाइल फोटो हमने सेट कर दी होगी, हम अबाउट के अंदर जाकर यहाँ पे अबाउट कहने का मतलब है कि हमारी गोल्स क्या है, हमारी स्किल्स क्या है, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है, बेसिकली हमारे बारे में सारी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन की समरी हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। अब ये ऐसा सेक्शन है जिसको आपको अच्छा और इंप्रेसिव बनाने की जरूरत है एंड शायद ये ऐसा सेक्शन होगा जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे इसको लिखने के लिए। अब 2 स्टाइल ऑफ राइटिंग होते हैं जो लोग यूज करते हैं अबाउट सेक्शन के लिए। एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है जिसमें हम फर्स्ट पर्सन के अंदर चीजें लिख रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी जैसे आई हमने यूज कर लिया, मी यूज कर लिया, तो इस तरीके से सबको पता चल रहा है कि ये मैंने लिखा है। दूसरा स्टाइल ऑफ राइटिंग कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि श्रद्धा खापरा हैज डन दिस, शी इज अ मोटिवेटेड पर्सन, या इस तरीके की चीजें। अब दोनों स्टाइल ऑफ राइटिंग में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो मैं प्रेफर करती हूँ, वो फर्स्ट पर्सन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, यानी जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने अपने गोल्स के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखने की कोशिश की है एंड उसको एक क्रिएटिव वे में हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहाँ से अपनी इंजीनियरिंग की, कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप्स की है, क्या क्या रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, टेक्नोलॉजी की टर्म्स में कौन कौन सी स्किल्स है, और अपने बारे में 1-2 एक्स्ट्रा चीजें जैसे अपनी हॉबीज के बारे में या कुछ और जो मेरे इंटरेस्ट है उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। तो जो हमारा अबाउट सेक्शन है उसमें प्रोफेशनल तो हमें सबसे ज्यादा हाईलाइट करना ही होता है, साथ में 1-2 पर्सनल चीजें जो शायद हमारे बारे में लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकती हैं उसको भी हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अबाउट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे ये होने वाला है हमारा स्किल्स सेक्शन। स्किल्स को ऐड करने के लिए हम यहीं पर जा सकते हैं और ऐड स्किल्स के ऊपर क्लिक करके कुछ स्किल्स होंगे जो ऑलरेडी सजेस्टेड है, नहीं तो हम खुद से जाके स्किल्स को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किल्स में अगर कोडिंग वाली स्किल्स है तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो जावा, मैं जावा को सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसको हम एज अ स्किल ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल लैंग्वेजेस, या अगर आप किसी दूसरी फील्ड से हैं तो आप अपनी फील्ड रिलेटेड स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। हम एमएस एक्सेल को ऐड कर सकते हैं, हम एमएस ऑफिस को ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किल्स है। अब स्किल्स के अंदर कोशिश करनी है कि एटलीस्ट मिनिमम 5 स्किल्स हम ऐड करें। अगर मान लो हमने आज ही प्रोफाइल बनाई है, आज हमारे पास 5 स्किल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ स्किल्स को बिल्ड करना है और फिर हमें उनको ऐड करते जाना है। स्किल सेक्शन हमारी प्रोफाइल में नीचे यहाँ पे आके दिखाई देता है, तो यहाँ काफी सारी आई थिंक ऑलमोस्ट 15 स्किल्स मैंने ऐड की हुई है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपको टाइम होगा अपनी फील्ड के अंदर आप और एक्स्ट्रा स्किल्स को ऐड कर पाओगे। अब स्किल्स वैसे तो हमारी प्रोफाइल का बहुत छोटा हिस्सा लग सकते हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोफाइल का। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब भी किसी रिक्रूटर को, किसी एचआर को लोगों को हायर करना होता है तो वो सबसे पहले उनकी स्किल के बेसिस पर ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू हायर अ वेब डेवलपर जिसको नोड.जेएस के ऊपर काम करना आता हूँ, तो मैं सिंपली नोड.जेएस डेवलपर को सर्च करूंगी। तो वहां पर लिंक्डइन क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो वो आपकी स्किल के बेसिस पर उसको काफी ज्यादा मैच करने की कोशिश करेगा। तो जिसकी प्रोफाइल से भी सबसे ज्यादा कीवर्ड्स हमारे किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के या रिक्रूटर जो सर्च करता है उस सर्च सेंटेंस के मैच करते हैं, वो प्रोफाइल सबसे ऊपर आ रही होगी। तो इसीलिए स्किल सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ये जो हमारा अबाउट सेक्शन होता है इसमें भी हमें ऐसे कीवर्ड्स को मेंशन करना है जिसके लिए जनरली रिक्रूटर्स सर्च करते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं रिक्रूटर्स आपको कांटेक्ट करें, तो आप अपनी ईमेल आईडी अपनी कांटेक्ट इन्फो के अंदर जरूर ऐड करें और इंश्योर करना कि वो रिक्रूटर्स को या जो भी आपकी प्रोफाइल देखे उससे दिखाई दे रही हो, ताकि लोग आपको ईमेल के ऊपर भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके रिगार्डिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूँ, इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और अब नेक्स्ट सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे ये होने वाला है हमारा एजुकेशन सेक्शन। अब एजुकेशन सेक्शन के अंदर अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप सिर्फ अगर कॉलेज का अपना एजुकेशन बताएंगे तो भी ठीक है, और अगर हम अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम अपने 10-12 के मार्क्स को भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन सेक्शन को फिलअप करने के लिए हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन के अंदर कोर में जाते हैं और एजुकेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट चीजें जो है वो फिलअप कर सकते हैं।
एजुकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बताने की जरूरत होती है, सबसे पहले तो अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आपके कॉलेज का नाम लोग जानते हैं या नहीं जानते, आपका कॉलेज चाहे कैसा भी हो उसका नाम फिलअप कर दीजिए। एंड साथ के साथ हम किस डोमेन के अंदर अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं उसको भी हम फिलअप करते हैं, कौन से ईयर में हमारी डिग्री स्टार्ट हुई, कब हम ग्रेजुएट होंगे, हम वो डेट्स फिलअप कर सकते हैं। और 2-4 लाइनें हम अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कॉलेज के अंदर अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना जो बैच है उसके अंदर टॉप किया है एकेडमिक्स के अंदर, या फिर आप स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर बहुत अच्छे हैं, तो उस तरीके की चीजें आप अपने बारे में यहाँ पर पॉजिटिव चीजें मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली हम स्कूल के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज मेंशन की हुई है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप चाहें तो और डिटेल्स भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग योर अचीवमेंट्स इन स्कूल। नेक्स्ट सेक्शन और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए होता है हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन। अब एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर सबसे पहली चीज जो मेंशन कर सकते हैं वो है फुल टाइम जॉब के बारे में, या अगर आप कोई स्टार्टअप के अंदर है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट हम अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में भी एक्सपीरियंस के अंदर मेंशन करते हैं। साथ के साथ अगर हमें कोई फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, या अगर जो स्टूडेंट्स कोडिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें अगर ओपन सोर्स का कोई एक्सपीरियंस है, उसको भी हम अपने एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मेंशन करने के लिए हम इस ऑप्शन पर जा सकते हैं और यहाँ से जाके जो हमारी करंट पोजीशन है उससे रिलेटेड चीजें हम यहाँ पर जाकर फिल आउट कर सकते हैं। तो ऐड करंट पोजीशन अगर आ जाता है तो उसमें हमें सबसे पहले तो टाइटल लिखना होता है। टाइटल के लिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई पिक अप दिस थिंग, तो यहाँ पे मेरा टाइटल था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न। एंड उसके बाद हमारा क्या एम्प्लॉयमेंट टाइप रहा, क्या वो इंटर्नशिप थी, फ्रीलांसिंग था, क्या पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, उसके बारे में चीजें लिख सकते हैं। हम अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, मैंने इंटर्नशिप मेंशन की, किस महीने से लेकर किस महीने तक इंटर्नशिप थी, कौन सी लोकेशन पे इंटर्नशिप थी। एंड उसके बाद अपनी इंटर्नशिप के बारे में आप कुछ कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं। अब जब भी आप इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे चीजें मेंशन कर रहे हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर लिखनी है, विच इज कि आपने इंटर्नशिप के अंदर कौन सी स्किल्स को यूज किया, क्योंकि हमारी प्रोफाइल के अंदर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मौका नहीं छोड़ना है कभी भी उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अपनी प्रोफाइल के अंदर स्प्रिंकल करने का। तो जो हमारे एक्सपीरियंस सेक्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न के अंदर भी मैंने अपनी स्किल्स मेंशन करे हैं, ये पहले वाली जो इंटर्नशिप थी उसके अंदर भी मैंने अपनी स्किल्स मेंशन की है, एंड इसी तरीके से जो 1-2 प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा थे उसके अंदर भी मैंने स्किल्स को मेंशन किया है। तो हर जगह जहां पे आपको मौका मिले वहां पे स्किल्स को मेंशन कर दो ताकि कीवर्ड्स ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट आपकी प्रोफाइल के अंदर प्रेजेंट हो। अब 8 पॉइंट के अंदर 4 चीजें हैं जो हम अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहला इनमें से पब्लिकेशन। पब्लिकेशन यानी आपने किसी रिसर्च आर्टिकल, किसी रिसर्च पेपर पे काम किया और उसको पब्लिश किया हो, तो उसके बारे में मेंशन करने के लिए हम जा सकते हैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन के अंदर, एडिशनल के अंदर हम पब्लिकेशंस को ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हम ऐड कर सकते हैं वो होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। अब एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को ऐड करने के लिए रिकमेंडेड में जाके ऐड प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के साथ भी उनकी स्किल्स मेंशन करनी है, प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 लाइनें हमें लिखनी है कि प्रोजेक्ट किस बारे में था, किस डोमेन से रिलेटेड था, और कोशिश करनी है जिस भी डोमेन में हम जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन में जाना है तो मैं कोशिश करूंगी मेरे जो प्रोजेक्ट्स हो वो कोडिंग टेक रिलेटेड हो। ऐसे ही आप जिस भी डोमेन के अंदर जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को हमें मेंशन करना है। इसके साथ साथ कई सारे स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स को भी मेंशन करते हैं। अगर आपने भी कोई कोर्स किया है, किसी बैच के अंदर आप थे जिसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो सर्टिफिकेशन को आप जाके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कई बार एज अ बिगिनर स्टूडेंट हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट को देख के हमें इंटर्नशिप या जॉब मिल जाएगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप किसी बैच या किसी कोर्स को कर रहे हो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कभी मत करना उसको। एक्चुअल जेन्युइन स्किल्स जो आप सीखोगे और जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करोगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन नहीं। पर हाँ, अगर आपके पास है सर्टिफिकेशन तो उनको आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ एडिशनल्स के अंदर जाके हमारे पास टेस्ट स्कोर्स भी होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी काफी अच्छी खासी अचीवमेंट रही है, जेई के एग्जाम में आपकी अच्छी अचीवमेंट थी, या फिर आपने कैट, गेट, जीमेट या स्कूल के अंदर जेएसटीएस, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर किया है, तो उन टेस्ट स्कोर्स को आप यहाँ पे जाके मेंशन कर सकते हो। तो वो काफी अच्छी चीज रहती है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो वो आपकी प्रोफाइल को और ज्यादा बेटर बनाते हैं और ज्यादा नोटिसेबल बनाते हैं फॉर एनी रिक्रूटर हु इज हायरिंग आउट देयर। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्चुअली बिल्ड अ गुड नेटवर्क ऑन लिंक्डइन। यानी लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ प्रोफाइल के अंदर इंफॉर्मेशन डालने से कुछ नहीं होता, हमें एक्चुअली जाके नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसको करने का सबसे पहला तो तरीका है, वी कैन स्टार्ट विद आवर कॉलेज एंड स्कूल एल्यूमिनाइज, जिनको हम जानते हैं, जो प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, हमारे ही कॉलेज से निकले हैं, अच्छी कंपनीज के अंदर काम करें, उनके साथ कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो ऐसे लोग हैं हमारी ही फील्ड के अंदर जिनका काम हमें अच्छा लगता है, हम उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड एक और रिकमेंडेशन मेरी रहेगी, अगर हम नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं
कि अगर हम किसी भी लेट्स सपोज हमने किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, या फिर अगर हमने किसी अच्छी सी स्किल को सीख लिया है, या फिर अगर हमने किसी हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, हमने कोई कॉन्टेस्ट जीता है, तो इस तरीके की जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं हमारे करियर के अंदर, उनके बारे में पोस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ताकि आपका जितने भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं, जो भी आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है, उसमें लोग नोटिस करें कि हाँ, ये व्यक्ति है जो अपने करियर को सीरियसली ले रहे हैं, उसके अंदर ये और आगे बढ़ने के लिए मेहनत डाल रहे हैं। तो वो जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं उनके बारे में आप पोस्ट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हैं, so that they also remember from time to time that yes, you are in this field and you are interested in doing work in this field and you're working hard towards it. अब लास्ट पॉइंट होगा टू ऐड सम फिनिशिंग टचेस, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम अपनी प्रोफाइल के साथ कर सकते हैं। Hey, I know that you are tired of watching my ad dozens of times, but what if I tell you all of this time I was right and I was. इनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रिकमेंडेशन। कोशिश करिए कि जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं, आप अपने 2-3 सीनियर्स से कुछ रिकमेंडेशन ले लें, यानी अपने बारे में कुछ पॉजिटिव बातें आप अपनी प्रोफाइल पे उनके थ्रू लिखवा सकते हैं। एंड ये रैंडम सीनियर्स हमें पिकअप नहीं करने, ऐसे सीनियर्स पिकअप करने हैं जिनकी इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी रेपुटेशन हो, यानी वो ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर जो आपकी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अब रिकमेंडेशन में ऐसा भी नहीं है कि हम 10-20 रिकमेंडेशन ले जाके 2 से 3 अच्छी रिकमेंडेशन काफी होती है एक प्रोफाइल के लिए। साथ के साथ हम कुछ लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंग्लिश हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस आती है, तो उनको भी जाके हम अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम फ्रेश कॉलेज स्टूडेंट है, तो हम अपने कोर्सेज के बारे में भी और ज्यादा डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं कि हमारे कौन से कॉलेज के अंदर कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज के अंदर हमारे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, अगर हम अकेडमिकली अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इस तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप थोड़ा सा लिंक्डइन प्रोफाइल को अगर एक्सप्लोर करोगे, तो आपको और एक्स्ट्रा चीजें लिखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये थे मेरे टॉप 10 पॉइंट्स जिनको हम ध्यान रख सकते हैं अगर हमें अपने लिए एक इंप्रेसिव लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। एंड जाते जाते एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है वो हमारी प्रोफेशनल जर्नी होती है, और जर्नी का मतलब होता है सफर जो चल रहा है। यानी ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक ही दिन हम प्रोफाइल बनाने बैठे और एक ही दिन के अंदर बहुत सबसे बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल हम बना लेंगे। ऑब्वियसली कुछ बेसिक चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, पर लिंक्डइन प्रोफाइल हमारी इवेंचुअली तब अच्छी बनेगी जब हम खुद अपने करियर के ऊपर कुछ कुछ चीजें कर रहे होंगे। यानी अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, तो हमें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हमें टेक के अंदर और नई नई स्किल्स को गेन करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हमें इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो एक्सपीरियंस है जो हम गेन करेंगे, तभी तो लिंक्डइन के ऊपर कुछ लिख पाएंगे। तो इसीलिए जब भी चाहे हम रेज्यूमे बना रहे हो या लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हो, कुछ बेसिक चीजें जिनका ध्यान रखना होता है, बाकी उसको एज अ जर्नी की तरह देखना होता है, जो टाइम के साथ धीरे धीरे हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ और ज्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। तो आई होप कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर आज का जो हमारा सेशन है वो आपको हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा लिंक्डइन से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड आपका कोई भी Ma'am, this was our video in which we tried to through which we try to explain about the LinkedIn profile setup. And now, I mean, if any questions related, anyone can ask. Is any question? Um, Good afternoon, panel. Nyonyok Talam this side. Yeah. मेरा पैनल से सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जितने भी वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स के बारे में मेंशन हुई है, ऑल आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सो इसका मतलब बेसिकली कोई ना कोई एल्गोरिदम पे तो जरूर काम करता होगा। सो आई वांटेड टू आस्क कि मान लीजिए हमने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाए, अब फॉलो करने के अलावा, बिकॉज let's say we just don't want to follow, to keep things minimal and also distraction free. So how are we to then really navigate the challenge of growing in this professional network? कोई other alternatives अगर है बिना फॉलो के, हमें एल्गोरिदम पे भी नोटिस भी होना है लोगों से, एंड वी ऑल्सो वांट टू कनेक्ट विद पीपल, बट स्किपिंग द मेथड ऑफ फॉलोइंग, तो कुछ और जरिया या मेथड है तो उस बारे में जानना चाहूंगा। थैंक यू।
Well, you can post about your stuff, what are your achievements in your life, what you are doing. You can post about that. And also, LinkedIn works on like just like we just saw a video. It says LinkedIn basically worked on keywords. So like as many as keyword you can mention in your profile, it will really helpful for you to get noticed on LinkedIn. Right, ma'am. So basically keywords एक बहुत important हो जाता है and Exactly. right? Yeah. अच्छा मैम, Right. पोस्ट इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो थोड़ा अलग होगा. It'll be more professional driven. Instagram is not for job search. Instagram No, is no, like social I'm just media platform. नहीं, मैं उसी को बस एक एग्जांपल, क्योंकि पोस्ट की बात आ रही है तो मैं बस उसको एक एग्जांपल की तरह यूज करके ये बताना चाह रहा हूँ, And okay. ये पूछना चाह रहा हूँ Mhm. कि जैसे कि हाँ मतलब इंस्टाग्राम में पोस्ट्स करते हैं, बट अगेन Mhm. आई टोटली अंडरस्टैंड कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है, वहाँ पे प्रोफेशनल ड्रिवन पोस्ट्स होती हैं. सो Mhm. मैं उसका एक या तो डेमो के बारे में मोर प्रैक्टिकल बेस्ड एक अप्रोच सुनना चाहूंगा, लाइक इफ यू आर पोस्टिंग समथिंग, सो हाउ शुड इट लुक लाइक एंड Okay, या So वो on Instagram, what you usually do, you post reels, feeds of photographs. But on LinkedIn, what you can share is you can type and post, or you can share your some what do we say, knowledgeful videos. Not like on Instagram we share anything, right? Anything in the sense your personal thing, but on LinkedIn it's more professional. Suppose if you are I think better Khushbu can explain. Khushbu is explaining, right? yes, ma'am. So, Hmm. ma'am, basically, if I talk about myself, just like I'm interning with Giftable. So, like, I can post about myself that I worked like 2 weeks or 15 days at a Giftable organization where my work was to connect with people and know about their community, like how they are dealing and how they are finding the job, is they are working or not. So, basically, I can write about that and post it on LinkedIn. So, it will also get me noticed throughout the other NGOs as well, which were exactly like the Giftable. So these kind of posts you can do that, like not about just like professional life. You can also update about just like you did a certification course, so you can also post about that, like I have completed this Sharing certification your course. experience in more formal way, kind of, Yeah, right? yes ma'am, yes, it should be formal. सो मैम जितना मुझे समझ आया है उसके हिसाब से इट्स लाइक आपको टेक्स्ट में ज्यादातर पोस्ट्स करनी है. इट शुड बी प्रोफेशनल इन टोन, नो मैटर इफ यू Exactly. टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस और योर अचीवमेंट्स, दोनों के बारे में बात Yes. करते प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए. Yes. Right. और हाँ, ज्यादातर पोस्ट टेक्स्ट में होगी. अच्छा मैम, उसके अलावा लाइक ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस है जिसके बारे में हमें पोस्ट, लाइक या मतलब कौन से कैटेगरीज है जिस बारे में हम पोस्ट कर सकते हैं एंड टू अवॉइड एंड यू नो You अप्रोच. should avoid about your friend circle, like you cannot post about your friends there. Okay. Yeah, like which is debatable topics regarding No. politics or which we Yeah, can't, right? exactly ma'am. And if you are ready to face consequences, you can debate about the politics as well. Yeah. ऑलराइट. ओके मैम, जी समझ आ रहा And since you are the one who asked about the resume as well, right? है. हाँ जी मैम. Yeah, so what was your question, can you repeat it? मैम मैं कुछ पर्सनल स्टेटमेंट में बात करता, फॉर एग्जांपल मतलब एक 3-4 लाइन का अपने बारे में कुछ तो लिखने का, ऐसा मैंने That's देखा. a Personal career details वाला objective. section. This was like I'll talk. मैंने कुछ लोग हेडिंग मेंशन कर देते हैं ना, लाइक पर्सनल डिटेल्स जैसे नहीं नहीं एक नहीं, करियर डिटेल्स ऑब्जेक्ट. नहीं नहीं नहीं, हाँ. डिटेल्स की बात नहीं हो रही है. इट्स बेसिकली मोर लाइक एक स्टेटमेंट सा. मैंने लाइक कई रिज्यूमे प्लेटफॉर्म्स में देखा है, उसमें ना एक Yeah, पर्सनल yeah. स्टेटमेंट करके एक सेक्शन होता है जिसमें ना. पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होता, वो करियर ऑब्जेक्टिव आता है आई गेस. हाँ, पर्सनल kind of, स्टेटमेंट. हाँ हाँ, लाइक क्या करियर ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो कई Career जगह पे. objective is something. Career objective is something that what you are looking in your next job, or like नहीं बट मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इट्स मोर ऑफ हाँ मतलब आप हो कौन, उसका एक डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ होता है. पता नहीं there ऐसे is फॉर there is no एग्जांपल. such thing in resume. Since you are a fresher, so your resume should be only one page.
And if you are professional, then your resume can go up to 2 pages as well. I think जी that मैम can come in the CV, what you are saying about personal probably शायद statement. जी Yeah, probably personal statement could be in the CV, which explains about yourself in detail. Yeah. kind of अच्छा मैम तो लगे हाथ तो if it's possible could you kindly explain बस maybe in couple of lines की CV और resume में फर्क क्या है I think ये बताया था क्वेश्चन किसने पूछा था It was my because question earlier. yeah it was yeah explained. exact उसी समय पे my network got back and everything because I was traveling हाँ back then. हाँ हाँ resume is a short more of a job description kind of like brief में बताना आपके बारे में है ना और CV is more of academic thing explaining in detail about you what you are. It could be of more than 2 pages, 2-3 pages, I guess. Yeah. जी also मैम जब हम resumes की बात करें so we don't mention our address बिल्कुल ही mention नहीं होता like थोड़ा भी नहीं नहीं या पूरा जरूरी नहीं आप कर सकते हो टॉप पे नेम उसके नीचे आपका कांटेक्ट ईमेल आईडी एड्रेस लिंक्डइन लिंक ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो एड्रेस But नहीं भी ma'am, कर सकते तो address, I think if a recruiter requires you that you put in on your resume. Otherwise, हाँ only मतलब number and मैंडेटरी email नहीं है only. Yeah. रख सकते हो It's kind of personal information, so you cannot put it on your resume. हाँ Hello. yes So, ma'am, basically, there is a one difference between CV and resume. Uh, Resume tells only what is important for one specific or particular job, and CV tells your full life story related to education and work. right So, I think this is the right main right difference. hmm जी any other question Yes, ma'am. Again, Fahim this side. hmm. So, Yeah. yeah. Now, I am asking specifically related to the LinkedIn. So, Hmm. like, as if I suppose if I'm doing BCA, so shall I more focus on like software engineering, coding, etc., or I can use my other skills as well. Other skills means in different fields also, such as I have the different fields, not just in technology, such as sports and music Hmm. and etc. So shall I use that also, or mainly I shall focus on the main thing? No, LinkedIn. I think Khushbu can better answer. Then I can add on. Hmm. Okay, so basically, ma'am, if you are doing your BCA and you have other skills in your resume, No. sorry, He is sorry, asking for LinkedIn. Huh? LinkedIn. Okay, like there is a heading about yourself on LinkedIn, that what you are doing and what are your skills. So you can combine all of this and put it into like a career summary there on LinkedIn Hmm. itself. You can So you can mention combine all of it. skill Doesn't it set. does sorry. Hmm. Which means, Hmm. as if we write our bio on Instagram or Facebook, we write what all our interest and whatever we Yeah, are interested in, all our kind skills. of that, but mostly I would suggest you to use the keywords. Like since LinkedIn is more about keywords now, so you like write your career like summary as in your keywords. So it will find you to noticed on LinkedIn. Okay, got it. मैम मेरा एक सवाल with regards to banner था I think banner is something that tells about us through a single image right जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है Sorry, can you repeat that? मैं सबसे पहले बैनर के बारे में जानना चाहूंगा like what's a banner Banner. लिंक्डइन में बैनर की बात हो रही थी ना Hmm. सो लाइक बैनर क्या वही है मतलब मुझे जो समझ में आया ये कि बैनर क्या वही है जो एक इमेज होता है जिससे मतलब आपका It's kind of a cover photo, ओके like a top background image, like professionally होती है. So it supports your professional identity and it tells recruiters that what you do in one glance. सो For मैम example, उसमें मेरी शक्ल नहीं होती
No, you can use a simple background there. There is no such thing like कि आपको अपनी पिक्चर पुट करनी होगी वहां पे आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर पुट कर सकते हो लाइक बेसिकली बैकग्राउंड होता है. मैम बुरा ना माने और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहूंगा लाइक थोड़ा नहीं, बेसिकली वहां पे आप अपने जो कैरियर गोल्स होते हैं ना उससे रिलेटेड कोई लाइन आप पेस्ट कर सकते हो उधर। आपके खुद की फोटो नहीं होती है वहां पे. ओके सो इट्स नॉट अबाउट आपके मतलब अच्छा इट्स अबाउट योर करियर मतलब इंटरेस्ट के या बारे में बस। प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशन No, स्किल्स या कैरियर गोल से जो भी रिलेटेड बैनर चीजें हैं। आई गेस इज आस्किंग अबाउट लिंक्डइन पे वो टॉप पे रहता है ना मे बी प्रोफाइल फोटो के जस्ट ऊपर वही वाला यस ना। मैम, यस मैम. हाँ तो उसमें आप कोई भी लाइक मतलब थोड़ा इमेज ऐड कर सकते हो मतलब उसमें कुछ ऐसा चाहिए नहीं है कि कुछ वो रिलेटेबल होना चाहिए बट थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा लगना चाहिए वैसा कुछ है। वो ये नहीं कि आप उसमें अपना मतलब फोटो अलग उसके नीचे लगता है एक सर्कल एरिया रहता है उसमें प्रोफाइल पिक्चर दिखाता है और उसके ऊपर बैनर लाइक लेफ्ट टू राइट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जितना स्पेस रहता है। आप उसमें कुछ भी ऐसा इमेज लगा सकते हो जो थोड़ा फॉर्मल लगे देखने में अच्छा लगे। जी तो Excuse me, Shweta ma'am. यस वो I think it was probably the last session. नहीं नहीं यही सेशन में अभी अभी तो बैनर की बात हुई ना लिंक्डइन की Wait, wait, जब wait. वो Let हाँ me. या दिस इज द लास्ट जस्ट विल हैव सम डाउट्स देन विल वाइंड अप Okay, so actually एंड आई जस्ट I have वांटेड some टू work, आस्क so may I leave the call now? आर यू इन आवर ग्रुप वेबिनार अपडेट्स Yes, ग्रुप? yes, yes. I am. I am. Yeah, okay then no issues Okay. if you don't have Thank you any so doubt you much. can leave. Yeah. Okay, thank you so much to Divya Ability Foundation and all the teams which explained each and everything very in a very accessible manner. So thank you so much. I'm grateful. Okay. Yeah. Thank you so much for joining. Welcome. Yes, thank you. Yeah, I think I have a question. Hi. yes. Yeah, this is regarding LinkedIn only. Yes. So our like job search and uh, this thing becomes very effective only when we use premium, is it? Sorry. LinkedIn Premium. Can you just repeat your question once? I'm just asking whether the job search becomes effective only when we use LinkedIn Premium. No ma'am, no. It's not actually required for you to get the LinkedIn premium. Doesn't matter if you have premium or not. No, I'm asking especially when you have some experience. It doesn't matter. बेसिकली विद प्रीमियम यू गेट मतलब you can see who viewed your profile and you can send direct Yeah, message yeah. or mail Yes. to recruiters and you can how you compare with other candidates and you can get extra learning courses. So premium feature can increases visibility but not only if your profile is strong. Am I audible? Yes, yes, you are. Yes. Oh, is your question answered? I think Yes, Sultan, yeah. right? Yeah. Yes. Thank you. Any other question? If you guys have any question now, you can ask. If you want like from like any question for the Viability Foundation regarding any other thing also about courses or something like that. Do you have any upcoming trainings? Like Yeah, yeah, that will be informed. Uh, Currently, we are going on with the digital marketing course. So after that, Hello, we'll post in the groups. Yeah. hello, Yes. hello, hello. Yes, you're audible. Ishwar is here. So Yes. my question is that the here is the Khushbu is here, na? Khushbu. Yeah. Yes. Yeah. Is she HR from?
Actually, I have a number, so I was contacting. No issue. I will No, personally chat with you. she is. Sorry. No, I I'm will not in. personally. I called you. I guess I called you regarding from the giftable organization itself, whether you are Giftable. working or not. Yeah. No. I got your number from one of the Amazon member. So he told that actually I was an ex-employee Amazon, so I was looking for the VCC role. So that's why I was Maybe it contacting. was just a mistake. I'm so sorry. So sorry. So sorry. It's Thank okay. you. I don't So, do we think have so. any more questions? I don't think so. Any more questions are there? So, We ma'am, can wait can for 1 more minute. okay, ma'am. Yeah. Okay, I don't think there are more doubts. So we'll wind up. So you're done with your PPT, right? Yeah, yes, ma'am, we are done. Okay. So I'll just wind up the session. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah. You just stop the screen. Yeah. Yeah. Okay. Share. You can stop this. Yeah. So, ma'am, can we leave this meeting? Yeah. Just 1 minute. I'll just conclude the session and then you can. Okay, ma'am. Okay, so there are no more doubts. So thank you everyone for joining this workshop today. It was really very insightful session. I hope we were able to give some like knowledge regarding resume building, interview guidance, grooming skills, and LinkedIn profile ethics. I thank all the participants and their enthusiasm, like they were till the end of the session. Thank you so much for being with us, and thanks Divyability Foundation for organizing this insightful session. And I look forward you all in the future session also. Thanks for joining. Thanks so much, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Thank you so Thanks, much, ma'am. ma'am. Thank you.